खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। इस वक्त जार फूड इंडस्ट्री के स्टॉल पे मौजूद है और यहाँ पर जो बुनियादी चीज़ें आपको दरकार है रमज़ानुल मुबारक से लेके और each other, confused, collided with each other as well, and ball landed safely. It could be costly. Hafiz bowler can do some damage. And there you see, he's trying to cause some damage and trying successfully. It has gone all the way as well. Two different kind of shots. Again, the first one was completely played away from the body, and this one was in his zone, and he was completely in command of that shot. Getting the ball underneath the bat, just hitting it towards the boundary. Probably giving the lesson to the bowler or to the fielding side. If you drop catches or if you misjudge catches, I will make you pay dearly. And these batters indeed can make you pay dearly if you drop their catches. Way outside the off stump, well held by the keeper, but it's going to be a wide and a couple of runs as well. Well, it's quite late for North Nawabs to start hitting now, but still they have 8 deliveries left, and some good score can get them some kind of lead. I was expecting around 100 runs from North Nawabs in this innings. At 70 target was quite achievable for North Nawabs. Let's see how much they end on. I think second innings will be very, very crucial as well in this match. Oh, he has gone down. What a big hit. It sailed over square leg for 6. And look at that. Dugout is absolutely jubilant now. Oh, he is in form now, again. Absolutely, he's making the minced meat of the bowling now. They dropped him, they misjudged his catch in fact. And then he is putting a foot on the accelerator. This one is turned away very neatly down towards the backward square leg. And he will get a single on the final ball of this over. Yes, it is. 5 overs have been done and dusted. 63 for none. KTPL Season 3, night number 8. This tournament will go on till 16 when the final will be played. Hafiz Bola just 9 short of what would be a tremendous half century. He struggled a bit in early part of his innings. But in the previous over, when he got away with a chance, he never looked back since. Really attacked and smashed a couple of, in fact, I reckon 3 sixes after that. He has given that a go. Long on and mid wicket, both were there, but he dissected them and picked up a boundary. A good shot towards the cow corner region.
And rightly picked in between two fielders. A great shot for a boundary. But you have so many gaps in between. There's so many pockets in the ground. Just need to pick the right ones to get those runs moving. Absolutely right. It's a big ground and you have a lot of vacant spaces. The great Sadiq Muhammad is also watching the match. Very well bowled. I think it did get an inside edge. And it should be a run out on the non-striking end. But it did pretty well. The batsman, he saved Hafiz Pola and gave his wicket away or sacrificed his wicket. And the first wicket falls. But the non-striker was not ready at all to leave the crease. And even though it was just a single, 2 runs were not needed. A wicket wasted for no reason. But let's see what the next batter has to offer. And that too, the run was short. It's not... So no run for North Nawabs. Good umpiring. Because he didn't put his bat inside the line. He turned even without putting his bat for the second run. So run was given short. Wicket also is fallen. .68 for 1 is the score. Umpires look a bit confused as well. I think they want to have a check. In fact, they want to know who is run out. Whether it was Hafiz Pola or it was Shafi. That's what they must be inquiring. I reckon. There you see. He still is in the crease now. I think the non-striker who came at the striking end is run out. Because the striking end batsman didn't leave his crease until other one came in. But let's see what will be the final verdict of the third umpire or the television umpire and what is going to be decided. New batsman has already reached. There we see it again. He is still in his crease. Although the man who is with the white cap, there you see, there wasn't anybody down there at the non-striking end. But whether they crossed each other, that should be the question, or that will be the question. That's why umpire are looking a bit confused. And they... Yeah, that's what I was about to say. Shafi is the one who's given out rather than the Hafiz Pola. Shafi is making his walk back. Earlier they gave Pola out, but I think common sense prevailed. Actually, Shafi was out. Pola did the right thing. Yeah, Shafi Aga is the one who got out, and Pola is still taking strike. Although wicket-keeper admired well bowled to confuse the umpire, but umpire didn't get confused, he called it a wide. Well, keepers do that a lot to get that one tiny bit of edge from the umpire. But again, umpires are quite smart and they know which one's a wide and which one's not. He played that away into the leg side. Again, they are coming back for the second. Has he reached his crease? Again, it has been referred upstairs for the TV umpire to see the replay and then make the decision.
was not really a good throw. If it was a good throw, it would have been out for me. For me, I think it is not out, and the batter reached crease by a very little margin, and that can be really close, actually. Yeah, it looks very tight. Although this angle is not giving us the clear view because umpire is in our way. There we see. He picks the ball up. Here he is dislodging the bells. Oh, it's very close. I think he's a goner. I think it's going to be bye-bye birdie for him. Yes, it is. Here comes a red light. Throw wasn't a good one, though. You are absolutely spot on, Kainat. But still, bowler able to pick the ball and dislodge the bails. And second wicket goes down. Hafiz bowler trying to get his 50 and his partners sacrificing their wickets for him. Because he's the one who's playing some strokes as well. That's why I think they are doing a right job too. Well, from the place where I see it, Hafiz Pola is responsible for 2 run-outs right now and 2 dot deliveries. And in the last over can be costly for North Nawabs. Let's see if he can compensate by hitting few sixes. No, he doesn't succeed. Oh no, it's a wide. It's a wide. Bowler is not happy though. He's absolutely furious with the umpire. Oh, look at his face. Look at his face. He doesn't look happy. It was a good delivery though. It was a very good delivery. Wide outside off stump on the wide line. But given wide by the umpire. I think umpire was a bit harsh on that occasion, Kainat, if I'm not sticking my neck out. But I think bowler was a bit unlucky that it was declared wide. And he has played that away. Oh, what is happening with the fielder? But thankfully other fielder was packing him. Otherwise that would have been a boundary. Well, this is why backing up is so important. And we have seen it on this occasion that a fielder was backing up. That's why the ball did not go for a boundary. Now they are ahead by 4 runs because their score is 74 for 1. And Hafiz is on 47. 3 short of what would be a good half century. With 2 balls to go in this over, which is the final one of their first innings. Full toss. Asking for the punishment. And it got the punishment which it deserved. 6. And Hafiz Pola brings his half century as well. Well, Basu shouldn't have tried something new. It was a proper full toss delivery and on the right area where it was easier for Hafiz Pola to pull it through the leg region. Now the batsmen are complaining that check the no ball out. Batsman thought he played that one from above waist height. Umpires are under a bit of scrutiny as well. First bowler didn't look happy with them when they called a wide. This time around they didn't call the no ball and batsmen are looking in disarray. Well, after the game they must have a meeting to get everything right and sorted. Yeah, final ball of the innings coming up. He bowled beautifully, but wicketkeeper didn't try to throw it. Bye is given. So they have ended their first innings at 81 for 1, the North Nawabs. So they have got the lead of 11 very vital and precious runs. Hafiz Pola straight not out at 54. A.B. Paro didn't get a chance to face even a single ball. Basit bowled the final over in which he gave away 15 runs. Pola at the end finished well. Although he struggled a bit in early part of his innings, then he was instrumental in a couple of runouts as well. I'm getting a bit carried away. I beg your pardon. It's the North Nawabs effect. North Nawabs scored 81. Means they've got the lead of 11
important runs. These are the highlights of Nawab's innings. Bola scored bulk of the runs. He took the bulk of the strike as well. He got a chance as well. Played few airy-fairy or wishy-washy strokes too, but he was very lucky that fielding side could not able to dismiss him. There he played some risky shots. This was properly connected. Another chance which he offered, but both fielders did not able to take it. Then a very good shot, proper whack. Then we saw some good bowling as well, and we saw some run outs as well. Another run out. Bowler smashed a 6 and got his half century with that one. Hafiz bowler 54 and Shafi got 60. Maz bowled couple of overs. Hassan bowled couple of overs. Shafi Basit bowled 1 over each, but no one could able to take any wicket. But Fields had couple of run outs. Now we are going for a little break and we'll join you back with the live action of next innings. माशाल्लाह केपीटीएल तो बड़ी मशहूर हो गई है, हालांकि सेकंड लीग है और जोहर साहब के ये कारनामे हैं माशाल्लाह कि कराची की जो रोड की क्रिकेट है ना, जो गलियों की क्रिकेट है, उनको ये टीवी पे लेके आए। वो लड़के जिनको चांस नहीं मिलता, आप देख रहे हो बेचारे, हर लड़का गलियों में खेल रहा होता है, रोडों पे खेल रहा होता है, जिनके पास कोई ग्राउंड नहीं होता, उनको ग्राउंड प्रमोट किया ताकि इससे हर प्लेयर को चांस मिलता है। और ये टीमें जो बनी हैं, इससे है कि लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है माशाल्लाह, लोगों को प्लेयरों को, अच्छे प्लेयरों को पैसे भी मिल रहे हैं और प्लेयर भी नुमायाँ हो रहे हैं। हो सकता है इन प्लेयरों में से हमारे को टेप टेनिस के बड़े अच्छे प्लेयर निकले, वही सब जोहर साहब को दुआएं दे रहे होंगे कि रोड की क्रिकेट को कितना ऊपर लेके आए माशाल्लाह। ये तो बड़ी बात है ना कि रोड के प्लेयरों को आप इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और टीवी पे लाइव के साथ कमेंट्री। कुछ छोटे छोटे गाँव में से देखो प्लेयर आ रहे हैं, वो बड़े शौकीन हैं, इनके पास टाइम नहीं होता है। असल क्रिकेट है ना हार्ड बॉल की, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्या है, उसमें टाइम चाहिए। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट टाइम होता है कि आप ये क्रिकेट को आप गली में भी खेल सकते हो, प्रैक्टिस गलियों में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं इसके लिए ग्राउंड चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के साथ आप स्पोर्ट्स में ले आएँ, क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे आप देखो, कोई पान गुटखे में लगा हुआ है, कोई सिगरेट में लगा हुआ है। ये चीज़ों से दूर करने के लिए आप स्पोर्ट्स में बच्चों को ले आएँ, पढ़ाई के साथ आप ग्राउंड में बच्चों को निकालें ताकि हेल्दी एक्टिविटीज़ है।
अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और ख़ास तौर पर शाहिद आफरीदी और उसकी फाउंडेशन का कि जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, और उसके साथ साथ टेप बॉल टेनिस को जो कि शाहिद खुद भी खेलता था। मैं तो जब क्रिकेट खेला करता था तो ये हमारे ही मोहल्ले में रहते थे, तो वहाँ मैं जब भी क्रिकेट खेल के आता था तो शाहिद को मैं देखा करता था कि बहुत तेज़ तेज़ बॉलिंग कर रहे होते थे। तो उस वक्त तो हार्डली ये 13-14 साल के होंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसे अंदाज़ा लग रहा था कि कहीं आगे जाकर ये इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत नाम करेंगे, और वो आपके सामने है। तो शाहिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो दीगर मेहमान गिरामी हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्सेप्ट यही था कि हमने टेप बॉल क्रिकेट को एक स्ट्रक्चर देना था। टेप बॉल क्रिकेट के बहुत प्लेयर्स हैं, जब हमने डेटाबेस इकट्ठा किया तो 400 से ज़्यादा के प्लेयर्स जो हैं वो आपको मौजूद थे पूरे पाकिस्तान में, जो कि अच्छा क्रिकेट खेलते थे। ये स्ट्रीट्स पे या छोटे छोटे मैदानों पे खेलते थे। तो बदर एक्सपो में ज़ुहैर नसीर साहब ने इस आइडिया को फ्लोट किया, कहा कि क्यों नहीं हम इस क्रिकेट को हम स्ट्रक्चर्ड कर दें, और आप हमें एक स्ट्रक्चर बना के दें जिसमें हम इसको बड़े मैदान में लेके जाएं, अंडर लाइट्स, लाइव टेलीकास्ट। तो ये सारी चीज़ें के पीछे जो है वो मैं फील करता हूँ कि बदर एक्सपो की जो टीम है अंडर ज़ुहैर नसीर, उनका बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने आज इसको ये सेकेंड एडिशन जो है वो होने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट पहले टूर्नामेंट से भी बहुत अच्छा होगा। और जो मुझे उसमें और जो बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो फ्रेंचाइज ओनर्स जो हमारे साथ मिले हैं, चाहे वो DHA दबंग हो या Welcome back once again to all of you folks, wherever you are from across the globe. We are back live now after the first innings break. As you see, both of the umpires are making their way to the center. We have got another eye-catching contest in our hands. It's a low-scoring game, but it's going to be a thriller, that is for sure. I've got Zishan Khalid with me. A warm welcome to you, Zishan. Thank you so much, Malakshay. Yes, indeed, it has been a low-scoring game in the first two innings, but anything can happen right now. I still believe they missed the trick. They missed the plot, North Nawab. They could have easily ended up with a healthy lead of 25 or 30 runs because they restricted a very strong opposition, Gulshan Gors, for just 70. And in the end, they could only muster 81 runs, getting a lead of just 11 in their allotted 6 overs. Yes, it looks as if they have shuffled their order, have Gulshan Gors. And it's going to be TM with the left-handed captain Bahadur making their way to the center. Yeah, that's a regular opening pair for Gulshan Gors. They tried something different. They sent Ehsan Chitta to open the batting for the first innings earlier tonight, but once again he failed. I think he's very short on confidence in this tournament, Ehsan Chitta, although he's a very big name when it comes to tape ball cricket in Pakistan, but so far he has just not got going. And so far these two batters have generally done the bulk of the scoring in the 3 games that they won. I think it was a good decision once again from the captain Bahadur lefty to have come out to open alongside Taimur Mirza. Yeah, that ploy of having a makeshift opener in Ehsan Chitta just lasted for 1 innings, and now they're back to normal. They've got a job to do, both of these opening batters, and they know each other pretty much. They complement each other pretty much. They've been playing tape ball between each other for so many years, I would say. Yeah, and they won't be worried at all because they just talking about North Nawab, they just lead by 11 runs, and if these two get going, they can easily start getting a lead from the very first over. Talking about that man on your screen, Asif Pathan bowled an exceptional first over where he picked up 2 wickets, and I was really surprised that he wasn't sent up the order tonight into bat because he has done some really good power hitting as well in the previous few matches for North Nawab. So he's someone whom they can bank on, not only with the ball but with the bat as well. Well, with the bat, surely they want to use him as a pinch hitter just towards the end of the innings, but surely he's doing some serious damage with the ball in his hands. Comes all the way from KPK, very talented, Asif Pathan. Play, says the umpire. And play, says the left-hander. Welcome to the bowling crease. That's gone all the way. Over squarely. What a way to start the innings.
That's what we were talking about. If these two get going, that lead of 11 runs is just going to disappear from the sides of their approach. What an excellent start this is from Bahadur lefty. It was pitched up on the leg stump. Look at that pickup shot from Bahadur lefty. Couldn't get going in the first innings, but has got off to a mark in the most best possible fashion. Well, down ball left-handers on their pads, they're very severe. Just two names come in my mind. Very strong on off their legs. Matty Hayden and Graham Smith. Change of angle. Didn't get the timing right on that occasion. The left-hander, but he seems to be in a mood tonight. Yeah, he does. And he's got a big responsibility up his shoulders as well, Bahadur lefty. Usually he's pretty silent at the crease. He doesn't show his expressions much, but when he gets going, he makes his bat talk. Cool, calm customer, but he has some power to offer in his stroke making. Oh, lost his run up. Feeling the heat. He's talented, I can tell you, but at the moment, just one indication, maybe feeling some sort of pressure. Full toss, inside half of the bat, in the gap. It's going to run away, but there is a protection. Surprisingly, there was a protection. So only single added to the total. Yeah, he's done the right thing, having two fielders on the leg side, one at long on and a fielder at deep square leg, specifically for Bahadur lefty, because he usually looks to swing everything on the leg side. But now he might change his angle. We will see a change in the field placement as well, because the brand of Tay-ball cricket, Taimur Mirza, is out there on the strike. Struck two really good boundaries in the first innings, Taimur Mirza, before he was dismissed as well. He has been a little silent in the previous two games, Taimur Mirza, although he started the tournament with 3 half centuries, if we are not wrong. Even the highest individual score still so far belongs to TM. Oh, nicely bowled. This is the music he's been facing when he's up against Asif. He's bowling right there in the block hole. And I tell you one thing, Zishan, it's very hard to get underneath that length. Yeah, he's pretty different, Asif Pathan, because first that he's coming around the wicket, he's trying to create that difficult angle. Second, he's got a slingy action. He's not got a straight arm action, so the ball stays low when he delivers them. It's very difficult to get underneath to the pitch of the ball. And he's been getting it right more often than not. That's why he's been very successful, especially against team. And to bowl to a batter of a team's caliber, you got to have big heart as a bowler. And at the moment, so far, so good. He has shown great courage, great consistency, and he's been rewarded as well. Yeah, he got TM out in the first innings, not because of the catch, but he knocked his stumps over. So that must have given him much more confidence as a fast bowler, especially when you can rattle the stumps of a batter like of Taimur Mirza. Oh, look at that. Even if he's bowling back of length, he's getting away with it. Because TM on that occasion, why he got beaten, in my opinion, he was anticipating another full delivery. So this is good bowling. Good change in the bowling. Now they're getting together, and I think they have made an appeal as well. I don't know what is happening. Talk us through this, Zishan. Well, the only thing that I can understand is that it's the end of the over. They have managed to score just 5. Because both these batters are still out there at the crease. They haven't decided to leave, so obviously they were in a hurdle, they were in a meeting. I think it's good signs for North Nawab. There you see Mr. Naseem Rajput standing in the pavilion with one of the guests this KTPL Season 3. It was the owner, Danish Khan of DHA The Bunks. But a good start once again by North Nawabs. They have just given away 5 runs. Well, I was hearing him when he was doing commentary in the Urdu stint. Was Naseem Rajput has given an information that there is a cinema next to this ground. Would love to go on and watch a movie after the stint is over, the commentary stint, but it's been restless up till now. I hope we can find time to do that. Oh, this time he's lofted it, and he's lofted it handsomely over covers. This is going towards the boundary, and fielder gets a hand on it, but still the ball wins the race. So a boundary to start the proceedings for Arshad. And not from the middle of the bat, but Bahadur lefty made his intentions pretty clear. He's not going to die wondering.
It was a length delivery just a little wide outside the stump, and the best thing that he did right was to play it over extra cover. He had no hesitation in keeping the ball down. There were two fielders who were after the ball. The ball did bounce twice before the boundary ropes. Even he got his hands to it, but still couldn't manage to pull the ball back. There you see him opening the face of the blade to get the placement. Forget about the placement. That has gone all the way. You can't have fielders beyond the boundary. Some more of that, please, Bahadur lefty. This time it was pitched up. It was a low full toss, and usually it's very difficult to get underneath to the pitch of the ball. But look at the timing, placement, elevation, and the distance on that stroke. A boundary and now a maximum to the captain. And a good finish as well. A very good follow through as he executed that stroke. One indication that he's going to take them on. He's prepared to take this bowling attack on the left-hander. Afridi has been picked, but it was outside half of the bat, down towards point. Only single added to the total. Yeah, he was looking to play another stroke over extra cover, but this time was looking to get so much away from the body, just couldn't time it well enough. Yeah, we were talking about the cinemas right next to the stadium, and the last show starts at 1:30 a.m., so you can still have time to watch that last show. But only if you would join me. Let's see, we'll go together if you have time tonight. Well, I'm a resident of Karachi. I've attended so many movies. Nicely bowled. He's getting away with it. Team looks off colour. There is no question about that. He's not looking in full flow. After those 3 consecutive half centuries against his name, he never looked in a good shape. I don't know what is going through his mind. Earlier when Naseem Rajput was doing the commentary stint, he was saying that maybe he's got under a shade of some pressure from the spectators because people expect him to do a lot. At times the expectations get better of you as a player. And maybe this is what is happening to him. Another surprising delivery. Slow bouncer. This is intelligent bowling by Arshad Afridi. Yeah, one more thing which might have slowed his batting form down is because of the tight packed schedule of this UBL KTPL Season 3. Usually they are playing back-to-back matches and they just get a gap of 1 or 2 days, and even in that gap they are usually practicing for the upcoming matches. So it gets a little difficult even for the tape ball players, although they are just playing 6 overs format, 2 innings, but still they are professional cricketers. Look at that. No timing behind that stroke. No conviction as well. It's brilliant bowling. End of the over. 2 done. It's 16 for none. It's 16 without a wicket after the first 2. Usually you do not see Taimur Mirza facing 6 deliveries and not getting off the mark. It's a real sign that he is struggling out there in the middle. He struggled last night as well when they suffered a defeat against Maleen Malangs, and you can see the pressure not only on Taimur Mirza but in the whole dugout as well. They did well to restrict North Nawabs to just 81 in the first innings, but I still believe you expect tons of runs, especially when you've got someone like S.N. Chitta, Taimur Mirza and Bahadur Lefty all in the same team. Well, all of the good players, all of the great players go through lean patches in their career. If Virat Kohli can go through a lean patch, if Babar Azam can go through a lean patch, why can't Taimur Mirza? Even if he's playing a tape ball, but he's got some reputation, I can tell you, as a player. But his fans will be desperately waiting him to get back into his form. Yeah, definitely. Because we have seen people in large numbers turning out here at DHS Sports Club Moin Khan Academy, especially to witness the fireworks of Taimur Mirza. But there's still 4 overs remaining, and the good thing is that Gulshan Gauhars haven't lost a wicket as of yet. As a good batter, all you need is one ball to connect from the middle of the bat, and then you're bang, back in form. Yeah, you start feeling good, the confidence there. You can feel that, yes, I'm in a good shape, I can do it. At the moment, it's been the bowler's night so far. Low scoring game, yet a lead
conceded by Gulshan Gohars. And Asif has been picked down to long on, and that will travel the distance. That's a good hit by the left-hander. He seems to have no worries. He seems to be in good shape, Zishan. Yeah, 22 runs have been scored so far by Gulshan Gohars, all coming from the bat of their captain Bahadur Lefty. Once again, it was pitched up, cleared his front leg and deposited way over long on. Good start to the over. Now they lead by 11 runs, Gulshan Gohars. Well, they still need tons of runs to end up with a respectable score. Well, I tell you what. Oh, it's gone in the air. Has it got enough distance on it? I don't think so, but it fell safely. Fall safely once again. Paula was there. He's one of the good fielders, but he's got away with it, left-hander, on that occasion. Yeah, we have seen some really good catches being taken by North Nawab's fielders in the first innings. Bahadur Lefty should consider himself very lucky that the ball just landed away from the fielder at long off. Once again, it was the angle which forced him to play it on the offside. The ball just landing in front of half his bowler at long off. But he got 2 runs. He's back on strike. And there you go. It's high in the air. And it's coming down. Oh, and a reverse cut made by Sarvam Kaka. Gee, he's one of the good fielders in Nawabs. He's taking his second catch of the night. And the first one was even better than this. But this time, it wasn't that bad either. So Asif Pathan continues to shine for North Nawabs. It's a pickup shot. It went miles up in the air. For a moment, he thought Bahadur Lefty, he might have cleared the fielder at long on, but that was not the case. A very safe catch taken by the fielder at long on. An Australian style of reverse cupping. And once again, it's the captain who is going to have to walk back. He scores 24 of 9. It's 24 for 1. So Alias Jani is the new coming batter at number 3. As the captain has been picked in the last delivery. He was trying to clear long on, but caught down the throat of Sarvam Kaka, who can't do anything wrong in the field tonight. I just get the feeling he was feeling that pressure, Bahadur Lefty, since the runs were not coming from the other end, from Taimur Mirza's end. So he thought it's his responsibility to score all the runs. He scored 8 of the first 2 balls and unfortunately was looking to go downtown once again. Couldn't middle it perfectly. This time nicely played off the back foot, sliced away, and the fielder is given a chase. They will come back for the couple. Well, that's the package he brings along himself, Ilyas Jani. He plays the ball on its merit. It's 8 p.m. It's a good move. He has been amongst the runs. He did that in the last game as well. He was the leading run scorer in the first innings. And they expect him to fire now as well. And fire he does! Because that is a fire from the bat. And it's gone all the way. Another maximum. This time it's the bat of Jani who does the talking. It's a firecracker that has sailed over the boundary ropes. Once again, in the arc, he was waiting for it. And depositing it towards the longest side of the ground over mid-wicket. Perfect start this to the right-hander. I tell you what, he's chosen the longest part of the boundary and he really middled that. This time inside half of the bat. It's going towards the boundary. There is a protection. Half his polo is down there, so only 1 run added to the total. And with that, over comes to an end. 3 overs done. It's 3 for 1. And with that, we have a change in the commentary. It's going to be Farooq Riaz alongside Rana Ishfaq.
रन की लीड ज़रूर है बॉलिंग साइड के पास, जिसे अब उतार के 22 रन एक तरह से हो गए हैं गुलशन गौहर के, जो उनका इफेक्टिव स्कोर है। और एक खिलाड़ी आउट है, इलियास और तैमूर मिर्ज़ा विकेट पे मौजूद हैं और आसिफ ने एक ओवर में 22 रन दिए। और तैमूर मिर्ज़ा चूँकि अब विकेट पे मौजूद हैं तो उम्मीद यकीनन उनकी टीम करेगी और साथ में इलियास से भी कि वो खुलकर बैटिंग करें। खुश आमदीद फ़ारूक। बहुत बहुत शुक्रिया राना शवाक। लो स्कोरिंग गेम अब तक ये जारी है, लेकिन अगली 2 इनिंग्स में काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्शन चेंज हो सकता है इस मैच का। 22 रन की लीड बहुत ज़्यादा नहीं है और सिर्फ 3 ओवर रह गए हैं, तो फायर पावर का वक्त है यहाँ पर गुलशन गौहर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इरशाद अपने दूसरे ओवर के साथ लेग स्टंप पर ये गेंद, विकेट कीपर ने गेंद को टंबल करते हुए गैदर किया और कोई रन नहीं बन सका। डॉट बॉल कितनी अहमियत की हामिल है, इवन 50 ओवर में अहमियत की हामिल है, तो 6 ओवर्स में आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि कितनी अच्छी बॉल है। जी हाँ, स्लिंगी एक्शन है यहाँ पर सलमान खान की तरह, और मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा मिनिमम है इनके, क्योंकि वो लेग स्टंप को टारगेट कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप उसी बॉल पर उसी लेग स्टंप पे फोकस करें। बाज़ औक़ात डिविएट करके बॉल वाइड डाउन द लेग साइड हो जाती है। बहुत ज़्यादा राइजिंग बॉल, अंपायर ने देखा भाला, फिर अपने बाजू फैला दिए, जो इस बात की अलामत है कि ये 2 रन्स फील्डिंग साइड कंसीड कर चुकी है। जी बहुत ज़्यादा हाफ ट्रैकर थी और ज़्यादा बॉल को पटखा उन्होंने पिच पे और हाफ वे डाउन, जिसकी वजह से सर के ऊपर से बॉल गई। और थोड़ा आगे की तरफ ही बॉल को पिच करें और उसके बाद बाउंस हासिल करें तो वहाँ पे मुश्किल हो सकती है और बैट्समैन को डिसीव भी कर सकते हैं बाउंस और पेस के साथ। ये गेंद भी लेग स्टंप से बाहर, वाइड से पहले अंपायर नो बॉल करार दे चुके हैं, तो लिहाजा ये नो बॉल रहेगी और फ्री हिट भी आएगी और 3 रन तो यहाँ बन चुके हैं ऑलरेडी। पहली बॉल काफ़ी अच्छी थी, उसके बाद बिल्कुल अपनी लाइन भूल चुके हैं आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, एक वाइड एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से और दफ़ा डाउन द लेग साइड। और फास्ट बॉलर के लिए मुश्किल होता है कि ओवर तवील होता जा रहा है और वो एनर्जी भी उनकी ड्रेन होती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर, और कॉन्फिडेंस भी लो होता है, फिर प्रेशर होता है कि अब लाइन और लेंथ को मेनटेन करें, वरना जो है फिर बैट्समैन की तरफ से जो है वो बड़े शॉट भी आ सकते हैं और डर होता है कि वाइड हम दोबारा जो है वो ना करें। तैमूर मिर्ज़ा अब स्ट्राइक पे हैं और फ्री हिट है उनके लिए। ऑब्स्ट्रक्शन और रन आउट के अलावा उन्हें आउट नहीं किया जा सकता इस गेंद पे। लेग स्टंप से बाहर, वेवर्ड और ख़राब बॉलिंग और गेंद बाउंड्री से बाहर निकल गई है। वाइड बॉल की सूरत में 6 रन और फ्री हिट भी बरकरार रहेगी। पहला ओवर बहुत बेहतर था इनका इरशाद का, और अब बिल्कुल जो है वो अपनी फॉर्म खो बैठे हैं। आखिरी 3 बॉलों पर कोई भी बॉलिंग की सही डायरेक्शन पे नहीं गिरी, पीछे गिरा हुआ गेंद विप करना चाह रहे थे तैमूर मिर्ज़ा, लेकिन काफ़ी डाउन द लेग साइड और कोशिश के बावजूद नहीं रोक पाए। लेग स्लिप के लिए भी कोई ख़ास मौका नहीं, और यहाँ पर थोड़ा लेग स्लिप थोड़ा और अगर वाइड हो जाए तो दोनों एरिया कवर कर सकते हैं अपने दाएं और बाएं जानिब। 21 रन इरशाद दे चुके हैं, कहीं ना कहीं महंगे साबित हो रहे हैं और अपनी लाइन और लेंथ पे बिल्कुल भी काबू नहीं रख पा रहे इस ओवर में। वाइड की, नो की, फिर 6 रन वाइड के बने। ड्रोन कैमरा के ज़रिए ये खूबसूरत शॉट आपकी स्क्रीन पर हमारी प्रोडक्शन टीम बड़ी जांफिशानी के साथ यहाँ काम कर रही है। दानिश खान और जोहेर नसीर देखे जा सकते हैं और तैमूर मिर्ज़ा अपने मखसूस अंदाज में इस गेंद को डिस्पैच करने में कामयाब हुए ऑन साइड पे। पहला छक्का तैमूर का इस इनिंग्स में। लाइन वापस गेंद की इरशाद ने और तैमूर मिर्ज़ा ने नहीं बख्शा, हल्का सा पीछे गिरा हुआ गेंद और उसको स्विंग के बैट को बहुत ही अच्छा कनेक्शन, फ्लैट छक्का लगाने में कामयाब हुए। बैट्समैन को भी फ्रस्ट्रेशन होती है जब बॉल बहुत ज़्यादा वाइड करते हैं, उनके वो भी सब्र करते हैं कब बॉल उनकी जोन में आए और वो बैट और बॉल का कनेक्शन हासिल कर पाए। यहाँ पे दोबारा से एक छोटी बातचीत यहाँ पे जारी, मशवरा लेते हुए इरशाद, अब प्रेशर और बढ़ गया इनके ऊपर, वाइड भी बहुत ज़्यादा दे चुके हैं और यहाँ पे 6 रन कंसीड किए हैं। 2 खिलाड़ी उनके पास आए, उनसे बातचीत की और मैं अगर उन्हें थोड़ा लाइटर मूड कहूँ तो उन्होंने कहा होगा कि अगर छक्का ही खाना था तुम पहली गेंद पे खा लेते, ये 8-9 रन देने के बाद छक्का खाया। इतनी महंगी बॉल की है। खैर हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। आई वुड लव टू स्पेयर अ थॉट फॉर द बॉलर्स। कभी कभार बड़े बड़े बॉलर्स को मैंने देखा, आउटस्टैंडिंग बॉलर्स को, कि उनकी एक्यूरेसी नहीं रहती। और एक और खूबसूरत पुल
और गेंद जो जाइंट स्क्रीन लगी हुई है स्क्वायर लेग पोजीशन की जानिब वहां गई, खूबसूरत छक्का। इस दफा पुल शॉट, बहुत ही शानदार शॉट, पीछे गिरा हुआ गेंद, एक्स्ट्रा पेस, और ये इसी पेस को एंजॉय करते हैं तैमूर मिर्जा, और फुल ब्लडेड पुल शॉट, काफी दूर जाके गिरी है गेंद, तो बहुत ही महंगा ओवर साबित होते हुए। जी हाँ, और हमारा एक कैमरामैन भी वहाँ मौजूद है, कवर कर रहा है सारे एक्शन को, अगर हमारी प्रोडक्शन टीम उसे दोबारा दिखा सके। ये तो फिलहाल आप देखिए जो वीआईपी बॉक्सेस हैं, बिल्कुल जो ड्रेसिंग रूम्स का एरिया है, वहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, और कैमरामैन एक मचान टाइप जगह पे मौजूद है, काफ़ी ऊंचाई पे हमारे, जहाँ जिस तरफ गेंद गई थी। कराची ट्रेप बॉल प्रीमियर लीग अपने तमाम तर रंगों के साथ डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी में जारी है। हर गैलरी में हम देख रहे हैं जो तीनों इसकी स्टोरीज़ हैं बिल्डिंग की, मीडिया बॉक्स की, वहाँ लोग खड़े हुए हैं बिल्कुल ग्रिल के साथ। तैमूर मिर्ज़ा ने ज़ोरदार स्ट्रोक अटेम्प्ट किया, मगर इस मरतबा बेहतर अंदाज में टाइम नहीं कर सके और 1 रन मिला। फील्ड में कुछ पश्तो भी सुनने को मिल रही है, एक दूसरे के साथ पश्तो में गुफ्तगू कर रहे हैं कुछ खिलाड़ी। या जो भी लैंग्वेज है, लेकिन मशवरा दे रहूँगा कि भाई कि अगर एक तरीके से ये ओवर ख़त्म हो जाए, और बहुत एक्स्ट्रास दे चुके हैं, बहुत तवील ओवर हो चुका है ये। मैं पश्तो कह रहा हूँ तो आप मानने के लिए तैयार नहीं। बस फरूख अब इस मरतबा गेंद को स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, और गेंद फील्ड हुई। इस दौरान 1 रन बनाने में कामयाब हुई इलियास। हीव करने गए थे बैट्समैन के फ्लैट छक्के की तरफ जाए, मिड विकेट की तरफ, लेकिन अलॉन्ग द ग्राउंड खेलने में कामयाब। और एक बर्ड व्यू यहाँ पे मोइन खान एकेडमी डीएचएस स्पोर्ट्स क्लब केटीपी सीजन 3, यूबेल अमीन मेजर स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के। उसके अलावा और भी बहुत से स्पॉन्सर जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाया, और तकरीबन हाफ वे स्टेज पे हम आ चुके हैं, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, और अभी तकरीबन 7 दिन और हैं इस टूर्नामेंट में। इस गेंद को बैक किया, लेकिन लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को ऑन द बाउंस फील्ड किया, सिर्फ 1 रन मिलेगा। इसी के साथ 4 ओवर्स मुकम्मल, 59 पे 1 गुलशन गौहर उनकी दूसरी इनिंग्स में। उनसठ पर 1 गुलशन गौहर 4 ओवर्स के बाद 48 रन की लीड हो चुकी है, और बहुत ही अच्छा ओवर साबित हुआ। इसमें तैमूर मिर्ज़ा के बल्ले से भी रन आए और एक्स्ट्रास भी काफ़ी कंसीड हुए। तो यहाँ पर अगर 2 ओवर्स में 28 से 30 रन आते हैं तो 80 के करीब स्कोर जो है शायद चैलेंज करे यहाँ पर नॉर्थ नवाब की टीम को। अड़तालीस रन कुल मिलाकर इनका स्कोर है। एक बार फिर अंपायर जो थे वो मैदान में गए थे और वापस आ रहे हैं। कुछ गेंदें उन्होंने हैंड ओवर की फील्ड अंपायर्स को। तैमूर 14 रन पे नॉट आउट हैं, इलियास 11 रन पे। सहराम एक अच्छे बॉलर की सूरत में उभर कर सामने आए हैं इस इवेंट में, या उभर कर अगर मैं ना भी कहूँ तो ठीक है, इन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है और वो गेंद करेंगे तैमूर मिर्ज़ा को। एक बार फिर आप जो मीडिया बॉक्स है, उसकी जो बिल्डिंग है, उसके सामने कुछ वीआईपी नशिस्तें बनाई गई हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि तमाशाई बैठे हुए हैं, मैच को एंजॉय कर रहे हैं। क्रिकेट की कवरेज में बहुत ज़्यादा जिद्दत आई है ओवर द ईयर्स। लेग स्टंप पर गेंद, ये वो इलाका है जिसे बॉलर बिल्कुल पसंद नहीं करते, मगर फिर भी उस इलाके में उतर जाते हैं, भटक जाते हैं और फिर पेनल्टी भी पे करते हैं 2 रन्स की। पेस हुक्म करने की कोशिश की थी यहाँ पे सहराम ने, लेकिन डायरेक्शन खो बैठे। और कोई भी बॉल अगर लेग स्टंप पर आती है तो बड़ा मौका होता है बैट्समैन के लिए को फ्लिक करे टाइमिंग के साथ, लेकिन अगर पेस मिलता है बैट्समैन को तो आसान हो जाता है कि बॉल को ट्रैवल करवाए बाउंड्री तक। खेलने गए थे गेंद को कहीं और, गेंद आई है कहीं और।
दूसरे रन की ख्वाहिश है और थ्रो थोड़ा कमज़ोर भी और बहुत वाइड वन भी, ना तो विकेट कीपर की जानिब थ्रो गया किसी भी एंगल से, ना बॉलर की जानिब, विकेट के वस्त से गुजरा और ऑफ साइड में कवर्स की पोजीशन जो शॉर्ट कवर है वहाँ पे फील्ड हुआ। किसको थ्रो कर रहे थे फील्डर, ये हैरान कौन है। जी हाँ, प्रेशर में थे फील्डर और अच्छी क्रिकेट तैमूर की तरफ से। जैसे ही देखा उन्होंने कि फील्डर को डाइव लगानी पड़ेगी, वो फ़ौरन पलट गए अगले रन के लिए, और जब वो पलटे तो फील्डर जो है वो उन्होंने थ्रो प्रोड्यूस की, सही पोजीशन में नहीं थे और स्ट्रॉन्ग थ्रो भी नहीं थी, बहुत वाइड, बड़े आराम से मुकम्मल 2 रन मुकम्मल की, और चांस होता अगर अच्छी फील्डिंग होती तो तैमूर मिर्ज़ा मुश्किल में आ सकते थे। इस मरतबा फिर लेग स्टम्प से बाहर, फिर वाइड के रन। सहराम काबू नहीं रख पा रहे अपनी लाइन पे और तैमूर मिर्ज़ा भी कुछ लिम्प कर रहे हैं, नॉट क्वाइट श्योर कि उनके साथ क्या। और अब मैं देख सकता हूँ नेकेड आई से, ये देख सकते हैं आप भी, आपकी स्क्रीन पे लेट गए बिल्कुल फ्लैट, और ये हम देख सकते हैं कि उनके साथी उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ क्रैम्प लगता है कहीं ना कहीं आया है, और होपफुली कि कहीं ग्रोइन का मामला ना हो, जो कि बड़ा मुश्किल होता है बैट्समैन के लिए। बट इतने पेन या तकलीफ में महसूस नहीं होते, तो मैं श्योर हूँ कि ग्रोन तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई क्रैम्प ज़रूर है। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से लेटे और मैक्सवेल की याद आ गई, और जो इनिंग्स उन्होंने खेली थी क्रैम्प के साथ, तो क्या पता वो क्रैम्प के बाद अपनी वो फॉर्म ले आए तैमूर मिर्ज़ा जो अभी तक उन्होंने वो झलक नहीं दिखाई है। और लगातार जो है ये मैचेस हो रहे हैं, तो थोड़ा सा एक एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं प्लेयर्स, लेकिन यहाँ पे फिटनेस और परफॉर्मेंस दोनों साथ साथ लेके चलनी है प्लेयर्स को। तो 6 ओवर्स के मैच में, और वो भी शाम अगर शुरू हो, तो एग्जॉस्ट इतनी जल्दी होना नहीं चाहिए, मगर चलो हो रहे हैं तो ठीक है। मेंटली मे बी कोई ब्रेक नहीं है मैचेस के दौरान, आप देख सकते हैं, इवन क्रैम्प कमेंटेटर्स को भी हो सकते हैं। ये आपको मेरा ख्याल, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं, ओसाका पीवीसी टेप, जो टेप लपेटी जा रही है, पोलो बेसिक, पर्पल पिंक, डे केयर, यूबीएल अमीन, केटीपीएल सीज़न 3 का मेन स्पॉन्सर है, पाकिस्तान बिजनेस, अल-बुर्राक मार्केटिंग। हम अपने तमामी स्पॉन्सर्स के इंतहाई मशकूर हैं जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में केटीपीएल सीज़न 3 को स्पॉन्सरशिप दी है। तो आप यकीनन कोई फिल्म वगैरह देखना चाह रहे हैं करीबी सिनेमा में डे ऑफ में, अगर डे ऑफ मिले, हाँ डे ऑफ तो मिलेगा नहीं। इस गेंद को खेलने गए थे ऑन साइड में, ये हो सकता है कि मैं दोपहर के वक्त आप सबको लंच ऑफर कर सकता हूँ। ये दोबारा ये पकड़ा हुआ है इन्होंने अपना घुटना, और परेशानी में है क्योंकि डे ऑफ है नहीं, तो शाम में तो कुछ नहीं हो सकता, दिन में एनी टाइम यू विल बी वेलकम्ड। शुक्रिया। और मुश्किल यहाँ पर है तैमूर मिर्ज़ा को, और यहाँ पर ज़्यादा बॉल नहीं रह गई, 10 से 11 बॉल का खेल है यहाँ पर, और यहाँ पे उनको अपनी फिटनेस मेंटेन करनी है। सहराम पेस बिल्कुल नहीं दे रहे तैमूर मिर्ज़ा को, डिसीव हुए इसी वजह से। ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को, फील्डर मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। बिल्कुल तैमूर मिर्ज़ा अब काफ़ी, जिसे कहना चाहिए, कुछ पेन में दिखाई दे रहे हैं, बार बार वो एक तरह से लिम्प कर रहे हैं। डॉक्टर कदीर डॉन केम ऑल द वे फ्रॉम गुजरांवाला, देन जोहेर नसीर, नसीम राजपूत एंड दानिश खान, ऑल आर ऑन योर स्क्रीन। KTPL सीजन 3, बदर एक्सपो सॉल्यूशंस एंड सादिक मोहम्मद, द ग्रेट पाकिस्तान ओपनर्स। कुछ मजीद खिलाड़ी भी उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ, और इस गेंद को ऊंचा उठा दिया। फील्डर गेंद के नीचे आने की सिर्फ कोशिश कर सकते हैं या गेंद को देख सकते हैं अपने ऊपर से निकलता हुआ 6 रन्स के लिए। इलियास का बहुत ही शानदार शॉट, बिल्कुल जोन में था बॉल उनके, और जिम्मेदारी निभाते हुए यहाँ पर, क्योंकि तैमूर से शॉट नहीं लग रहे, तो इलियास ने मौका ज़ाया नहीं किया। ओवर पिच गेंद, बहुत ही आला कनेक्शन, क्लीन स्ट्राइक, हाइट भी हासिल की, लेंथ भी हासिल की, और जब तक इनिंग्स ख़त्म नहीं होती तो इन्हीं को फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। There you see it again, सादिक मोहम्मद, ग्रेट टेस्ट क्रिकेटर फॉर पाकिस्तान। ऑफ साइड में जगह मिली,
अपने बाजुओं को एक्सटेंशन दी और ऑफ साइड में खूबसूरत चौका। बहुत ही अच्छा शॉट, मेरिट पे खेला शॉट को, लिफ्ट किया उसको डेलिबरेटली ओवर द रिंग और पेस का इस्तेमाल किया। मौका यहाँ पे मिला था, लेग साइड पे खेलने की कोशिश नहीं की, बैट के फेस को हल्का सा ओपन करते हुए 4 रन हासिल की। और ये एरिया वो है जहाँ पे प्रोटेक्शन अक्सर नहीं रहती बाउंड्री पर। रन आते हुए इलियास की तरफ से काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं ये तमाम लोग जो आपकी स्क्रीन पे हैं। इस मरतबा सही तरह तो नहीं खेल पाए, मगर गेंद फिर भी गई है डीप में और रन नहीं लिया क्योंकि तैमूर को कुछ प्रॉब्लम है दौड़ने में। इसी के साथ ये 5 ओवर्स मुकम्मल हो गए, 76 पे 1। छिहत्तर पे 1 राना। और अभी हम पहले देखते थे इंटरनेशनल क्रिकेट में कि कोई भी इंजरी हो, फिटनेस के मसाइल तो रनर आते थे हेल्प आउट करने। और स्पेशली सईद अनवर की 194 की इनिंग्स, उसमें शाहिद आफरीदी ने रनिंग की काफ़ी, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द इनिंग्स शाहिद आफरीदी ने रनिंग की। फिर ये रूल ख़त्म कर दिया। तो इस फॉर्मेट में आपकी नॉलेज में है कि रनर लिया जा सकता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि उसी को फॉलो किया जा रहा है, शायद रनर नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि तैमूर स्ट्रगल कर रहे हैं, लिम्प कर रहे हैं, मगर अब तक रनर नहीं आया। तो इससे मुझे यकीन है कि ऐसा अलाउ नहीं है। बिल्कुल सईद अनवर का आपने सही रेफ़र किया, जब 194 किया उन्होंने हमारी प्रोडक्शन टीम की साथी और हिना जो ग्राउंड इंटरव्यूज़ आपके लिए लेकर आती हैं, दोनों मौजूद हैं। अच्छा, चाय एक खातून पी रही हैं, दूसरी जो है वो हाथ हिलाने पे इक्तिफा कर रही है। कम ऑन लेडीज। हिना दीदार, शी इज टेकिंग द टी विद, बहुत ही जिसे कहना चाहिए ना, मोहब्बत के साथ चाय पी रही है। इस मरतबा हो चाहे शॉट और गेंद आएगी हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने जहां वीआईपी बॉक्सेस भी हैं। जोरदार और खूबसूरत छक्का। ओवर पिच गेंद सैफुल्ला की और हुमियाजा भुगतना पड़ा यहाँ पर, बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी और ऐसी लेंथ थी जहाँ पर तैमूर मिर्ज़ा को कोई ख़ास फुटवर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन से इसको लिफ्ट किया बड़े अच्छे अंदाज में। स्टिल अभी परफेक्टली फिट नहीं है, लेकिन बहुत ही शानदार आगाज से आखिरी ओवर का 82 पे पहुंच गया स्कोर। इस मरतबा बीट हुए तैमूर मिर्ज़ा, अपना बैट थ्रो किया था उन्होंने। विकेट कीपर ज़रूर अपील कर रहे हैं और साथ साथ विकेट कीपर ने कुछ नोक झोंक भी की उनके साथ। उन्होंने कहा कि आप बोल्ड हो गए हो, लेकिन तैमूर मिर्ज़ा ने कहा नहीं, बोल्ड मैं नहीं हुआ हूँ। और बॉलर ने अपने सर पे हाथ रखे थे। ओह, बैठ गए डिसअपॉइंटमेंट में कि बैट्समैन आउट कैसे नहीं हुए। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये भी हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कि हल्का सा बॉल ब्रश करते हुए, स्टम्प्स को ब्रश करते हुए गया कीपर के पास, तो ऐसा लगता है कि इनसाइड एज हुआ है। और बाज़ दफ़ा बेल्स नहीं भी गिरी, तो बेल्स का गिरना बड़ा ज़रूरी है। इस मरतबा स्विंग कर दिया है ऑन साइड में। अंपायर को एक बार फिर जहमत करना पड़ेगी। अपने दोनों हाथ उठाए हवा में, एक और छक्का तैमूर मिर्ज़ा का। फाइटिंग इनिंग्स है यहाँ पर तैमूर मिर्ज़ा की और इस टाइम के साथ अपनी इनिंग्स को जारी रखते हुए और एंटरटेनमेंट यहाँ प्रोवाइड करते हुए प्लेयर्स को और स्पेक्टेटर्स को। पीछे गिरा हुआ गेंद और पनिश किया बड़े आसानी से। फुल ब्लडेड पुल शॉट तैमूर की तरफ से। 29 से पहुंच गए इस छक्के के साथ। 2 छक्के लगा चुके हैं, एक ओवर पिच गेंद पे, एक शॉर्ट पिच बॉल पर। 77 रन्स अब इनका इफेक्टिव स्कोर हो गया है। तैमूर मिर्ज़ा अब हर गेंद को स्ट्रोक खेल रहे हैं, मगर दौड़ नहीं सकते, लिहाजा ये सिंगल जो लिया जा सकता था नहीं लिया। और 2 गेंदें अब भी उनके पास हैं। लेट्स सी अगर कंपनसेट कर सके बड़े स्ट्रोक्स की सूरत में। एक दफ़ा फिर छक्के के बाद डॉट बॉल और 1 रन ही बन पाता। तैमूर मिर्ज़ा ने मना किया और मुश्किल होती उनके लिए कि वो दौड़ते रन के लिए। अब कोशिश करेंगे कि मज़ीद 2 छक्के लगा के इसको 24 रन के साथ इस आखिरी ओवर को मुकम्मल करें। सैफुल्ला ने एक गेंद बहुत अच्छी की थी, 2 छक्के उनको ज़रूर लगे और 2 डॉट्स करने में वो कामयाब हुए हैं। एक और ऊंचा स्ट्रोक, हालांकि उस तरह की टाइमिंग नहीं कर पाए जिस तरह की वो चाहते थे, लेकिन फिर भी इनफ है कि गेंद बाउंड्री से बाहर निकल गई है 4 रन के लिए। और फील्डर जो है वो एक तरह से स्लिप हो गए थे जब गेंद के नज़दीक पहुंचे, तो होपफुली कि वो बिल्कुल ठीक हो, कोई ट्विस्ट ना आया। जी, इतनी प्रॉपर टाइमिंग, इतना प्रॉपर कनेक्शन नहीं था, लेकिन डीप में कोई फील्डर मौजूद नहीं। काफ़ी उनको
चेस करना पड़ा, लेकिन बॉल इन दी एंड बाउंड्री के बाहर चली गई। तो 6 तो नहीं 4 रन यहाँ पे हासिल किए। 16 रन आ चुके हैं। लेंथ में जो इतनी सही से कंसिस्टेंट नहीं है। हाफ ट्रैकर भी दी उन्होंने, ओवर पिच गेंद भी की, इस दफा विट भी दी ओवर पिच के साथ। इस गेंद को ऑन साइड में खेलने में कामयाब हुए, ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही 1 रन जो है वो मिलेगा। इस मरतबा लंगड़ाते हुए पहुंच गए हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ 93, 1 विकेट के नुकसान पर। इस तरह 82 रन की ओवरऑल लीड है और 83 रन का टारगेट जो है गुलशन गौहर ने नॉर्थ नवाब्स को दिया है ये मुकाबला जीतने के लिए। नहीं, स्कोर इतना बुरा नहीं है, 82 रन और जो नॉर्थ नवाब को चेस करना है। और ओवरऑल इतना हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन अच्छा कमबैक। ये हाईलाइट्स बहुत लेफ्ट इनिंग्स का आगाज से बहुत ही आला शॉट क्लिक किया, वो फिर ऑन साइड पर ऑफ साइड पर और कलाई का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ओवर अच्छा कवर, फिर वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन गए। ओवर पिच गेंद का उन्होंने किसी भी बॉलर को नहीं बख्शा। दूसरा शॉट खेल गया, अच्छी टाइमिंग की नहीं मिली और बहुत ही अच्छा कैच। हाफिज पोला की बहुत ही उम्दा कैचिंग है आज। 2 शानदार कैच पहले ले चुके हैं। इरशाद को 2 छक्के पड़े। तैमूर मिर्जा ने 1 ओवर में 2 छक्के लगाए थे। बहुत ही शानदार पुल शॉट ऑफ साइड पे, बहुत ही अच्छा शॉट लिफ्ट किया इसको। तैमूर मिर्जा का छक्का ये आखिरी ओवर में जो उन्होंने छक्का लगाया था पहली बॉल पर। उसके बाद ये 4 रन हासिल किए उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पर। और इस तरह अच्छा ओवर आखिरी ओवर जो गुलशन गौहर के लिए। ये स्कोर कार्ड हमारे सामने 24 बनाए बहादुर लेफ्टी ने, 34 तैमूर मिर्जा और इलियास ने बनाए 21। 14 एक्स्ट्रास के साथ 6 ओवर्स में 93 रन स्कोर किए गुलशन गौहर ने। बॉलिंग कार्ड 1 विकेट मिली आसिफ को और उसके अलावा इरशाद काफी महंगे रहे। सराम नन फॉर 17 और सैफुल्ला नन फॉर 17। और अब गुलशन गौहर की टीम फील्ड पर आ चुकी है। अंपायर्स भी रेडी हैं और थोड़ी देर में नॉर्थ नवाब के बैट्समैन मिडिल पर आएंगे और इस चेस को मुकम्मल करेंगे। 82 रन चाहिए और एक एक्साइटिंग फिनिश एक्सपेक्टेड है। आज के दिन का पहला मैच यूबीएल अमीन केटीपी सीजन 3। अच्छी फायर पावर है यहाँ पर और बैटिंग इतनी बुरी नहीं है यहाँ पर। और यकीनन उनके पास सलाहियत है कि वो चैलेंज करें यहाँ पे गुलशन गौहर को। और कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली अगर अगले 3 ओवर्स के लिए आपका साथ देंगे दिशान खालिद और कायनात इम्तियाज। Thank you so much, Farooq. Yes, the batting struggles continues for Gulshan Gauhars. They could only score 93 in their second innings. That means North Nawabs just need 83 runs to win their second game of this UBL Amin KTPL Season 3. We saw Taimur Mirza struggling. He was literally limping towards the end of the innings for Gulshan Gauhar. And I still believe he still managed to score valuable 17 runs. There you see the equation is pretty simple and pretty clear for North Nawabs. They need 83 runs to win. And it's going to be a huge moral victory if they can manage to chase down this target against a very strong side like Gulshan Gauhars. Safiullah gave away 17 runs in the last over, which I think can turn out to be the deciding factor of the game as well, because Taimur Mirza was literally struggling. He didn't even try to attempt a slower delivery because that might have made it difficult for Taimur Mirza to strike the ball, but he still managed to connect 2 maximums and a boundary. It all depends how the openers of North Nawabs are going to start this run chase. Welcome to the comment box, Khainat Imtiaz. Thank you so much. I was expecting to see some big scores on the screen. And Hafiz Pola on the crease again. Let's see what he has to offer his team in the last inning of the game. A calculated innings will be very much needed. And the non-striker is A.B. Paro.
Yeah, two very strong right-handers are out there to open the batting for North Nawabs. Hafiz Bowler got a half century in the first innings. They lost 2 wickets, both of them because of run-outs, so none of the bowler could pick up a wicket in the first innings if we talk about Gulshan Gohar's bowling lineup. But now they need to pick up wickets early. They need to make inroads, they need to make it difficult for Nawabs to chase down this target. The left-arm seamer is going to start the proceedings. Hafiz Bowler is on strike, long gone in place. He swings it on the leg side, it's high up in the air, he has not connected it well enough. But the ball will still travel to the boundary ropes. Once again opening his account with a maximum, continuing from where he left off in the first innings. That's a good thing that is continuing from the next inning, the last inning, because this is what North Nawabs need to win this game. Yeah, they've played 3 games so far, they have just won 1. If I'm not wrong, they are at the 6th position or the 5th position at the points table. They need to get a win here tonight. On the other hand, Gulshan Gohars, well, they still haven't recovered from the defeat that they suffered last night against Maleen Malangs. Mars lefty running in once again. Slams it wider of the fielder at long on. He dives towards his right. It's S. Chitta. He's having a difficult time in this tournament, not only with the bat but with the field as well. It's a good thing that the fielders are taking full advantage of the fact that it's such a beautiful ground. And the field is so fast, you can just slide around anywhere you want to. So yes, all those kind of great fielding efforts will be needed for Gulshan Gohars to save this target. Yeah, the fielding and the catching is going to play a very important role in this run chase. North Nawabs were absolutely brilliant in their catching. Mazullah is bowling the first over. So far has given away 8 runs already. It's a full toss outside the off stump. It's missed by the batter, missed by the wicketkeeper. Does it have enough legs? Yes, it does. Not good signs just for Gulshan Gohars. There was no contact with the bat as well. That's why 4 byes have been signalled by the on-field umpire. So the runs are coming thick and fast for North Nawabs. Well, I was expecting to see a huge shot, but again, a boundary from the back. And completely missed by the batter, the keeper and the fielder. So unlucky runs for Gulshan Gohars. Yeah, indeed, exactly the start North Nawabs were looking for. 12 runs have been scored already in the first 3 balls. Just such a big advantage, especially when you get off to a very good start, a flying start in the run chase. You never know, one good over from the bowling side can make it difficult towards the middle stages of the innings. Inside edge, this is. This time he couldn't beat the fielder at fine leg. But Hafiz Bowler is looking to smash everything out of these sides. He batted beautifully in the first innings, scored a half century, was the leading run scorer for his side. And I really thought Gulshan Gohars missed out an opportunity tonight because they just got a lead of 11 runs. They could have easily scored 120 because they have the firepower in the batting lineup. But I think since Taimur Mirza was struggling earlier on in this innings, he took 8 deliveries to get off the mark with. And even when he started to get going, it was the injury that halted his innings. He's hit that straight, it's flat, it's straight to the fielder. What a brilliant take. This is from S. Chitta. He's straight away raising his finger. That was a clean catch. What a great catch by the fielder. As I said earlier, they're using the ground and also they know where the boundary is. He was standing right on the boundary to get that catch. Completely known where the boundary is. And an easy catch. Not an easy catch, but yes, a great catch by the fielder. Yeah, he jumped at least 10 to 12 inches to take that one. He's the tallest in the Gulshan Gohars liner. Only he would have completed that catch. But a big wicket at this stage for Gulshan Gohars because Hafiz Bowler has been dismissed. Could only score 8. It's 12 for 1. Meanwhile, let's go towards Hina Didar, who's out there on the sidelines. Thank you so much, Zishan. It's North Nawab versus Gulshan Gohars happening at the DHA Moin Khan Cricket Academy. But with me right now is a crazy fan that I would like to introduce him to all of you. Well, turn around. मुड़ जाए, मुड़े. दुनिया वालों को देखने दे आपका नाम क्या है? पीछे मुड़ के दिखाएं अपना नाम.
अपनी जर्सी के पीछे नाम लिखा है ना आपका? यस क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुनीर आलम। यस वेल, आप दोबारा मुड़ जाएं, आप अपना फेस दिखाएं। ये क्रेजी फैन है और हर छक्के चौके पर जिस तरह मुनीर आलम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब पूरा ग्राउंड हैरान है। मुनीर, कैसा फैन? आप फैन है या क्रिकेटर है, पहले ये बताएं। हम अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेटर हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम से खेलेंगे। ओके, नॉर्थ नवाब की टीम में खेल रहे हैं आप? यस सर। खेलते हुए देखा नहीं, लेकिन एंजॉय करते इंशाल्लाह हुए बहुत खेलेंगे, देखा। इंशाल्लाह खेलेंगे, जरूर खेलेंगे। अगर मौका मिला तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, वैसे जब एक छक्का लगता है तो किस तरह सेलिब्रेट करते हो? जरा दिखाओ किस तरह के इमोशंस हैं। माइक में तो कैसे सेलिब्रेशन बस समझे एक नॉर्थ नवाब ने छक्का मारा है, अभी वो सेलिब्रेशन आ ही नहीं पाएगी जितना कर ले आप, चले वो नेचुरली आता है सेलिब्रेशन, नेचुरली आता है ठीक है। और टीम की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है? नॉर्थ नवाब वर्सेस गुलशन गौहर, एक विकेट आपकी चली गई है आपकी टीम की। कोई बात नहीं, एक विकेट गई है, मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। और परफॉर्मेंस तो अल्लाह का शुक्र आज अच्छी की है, बैट्समैन ने भी एफर्ट किया है। बॉलर्स तो नो डाउट माशाल्लाह हर मैच में एफर्ट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बैट्समैन ने भी आज माशाल्लाह बहुत अच्छी एफर्ट की है, जैसे पहले की थी और इस बार भी की है माशाल्लाह। इंशाल्लाह जीतेंगे, हमें पूरा अल्लाह पे यकीन है इंशाल्लाह। अच्छा, क्रेजी फैन तो हैं आप, लेकिन ये बताएं बैटिंग करना पसंद करते हैं या बॉलिंग? फास्ट बॉलिंग। अच्छा, फास्ट बॉलर है, ओ जबरदस्त। अच्छा, साथ साथ आप पानी की बोतल्स भी ले जाते हैं? यस, तो जो भी काम हो करना, तो पानी पिलाना वैसे भी सवाब है, तो सवाब की नियत से ये काम करते हैं। जबरदस्त। और वैसे ओवरऑल केटीपीएल में किस तरह आपका एक्सपीरियंस है? पहली बार नॉर्थ नवाब के साथ है? यस, पहली बार नॉर्थ नवाब के साथ हम। किस तरह का कंपटीशन लग रहा है? बाकी टीम्स में कौन से टैलेंट आप नाम लेना चाहेंगे? कौन सा आपको टेप बॉल क्रिकेटर पसंद है सबसे ज्यादा? अच्छा, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन टैलेंट की जहाँ तक बात है, मैं चाहूँगा कि तैमूर मिर्ज़ा जो है मेरा नाम ले, और इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिले तो इंशाल्लाह उनके सामने अगेंस्ट बॉलिंग ज़रूर करूँगा। कभी भी अगर मौका मिला, इस सीज़न नहीं मिला, नेक्स्ट सीज़न मिला या अगले भी जिस सीज़न मिला, मैं मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह उनको अगेंस्ट बॉलिंग करूँ। तैमूर मिर्ज़ा, खुरम टेप बॉल में अपना करियर बनाना चाहते हैं या हार्ड बॉल की तरफ जाना चाहते हैं? मैं दोनों में बनाना चाहता हूँ। हार्ड बॉल में अंडर 16 का भी ट्रायल भी दिया है, तो इंशाल्लाह सेलेक्ट होंगे। और अभी जो है टेप बॉल पे भी हम जो है करियर बनाना चाहते हैं। दोनों में लेके चलना चाहता हूँ कि दोनों साथ लेके जाऊँ, क्योंकि वो गली मोहल्ले की क्रिकेट है, तो वो ग्राउंड्स में खेली जा रही है, तो और भी बहुत अच्छा लग रहा है कि गली मोहल्ले की क्रिकेट को उठा के ग्राउंड्स में लाया गया है और लाइव दिखाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है केटीपीएल, खासतौर पर ज़ोहिर भाई ने इसको अहमियत दी टेप बॉल क्रिकेट को, और इसको स्टार्स को सामने लाया ग्राउंड्स तक, कि वो सामने आके परफॉर्म करें और दुनिया में दिखाएं कि भाई हमारे यहाँ पे टेप बॉल्स के भी स्टार्स हैं। डेफिनेटली, और हो सकता है मुनीर आलम इनकमिंग फ्यूचर में एक स्टार हो। थैंक यू सो मच। वेल, अभी संजीदा बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह छक्के चौके और विकेट्स गिरते हैं उसमें बहुत इमोशनली एक्सप्रेस करते हैं। बट इट्स टाइम टू गो बैक टू द कमेंट्री बॉक्स. Thank you so much, Hina. Yes, Munir Alam is still a die-hard fan of North Nawabs, and it was good to hear him sharing his future plans as well. Meanwhile, Mursalim is the new batter in at number 3. We saw Hafiz Bowler getting dismissed in the last over. Safi is going to start the second over of the innings. Wild swing, just a little wide outside the Ostrom. Good start this from the fast bowler. AB Power completely missing the line. It was an off-stump delivery outside off-stump, and it should have been a shot towards the extra cover. But they'll need to play on the merit of the ball to get the target being easy. Yeah, even North Nawabs has shuffled their batting order. It was Zain Pathan coming into bat at number 3 in the previous games as well. A slower one. Hasn't timed it at all. That's going to be a dolly of a catch. Completely fogs the right-hander up. Really good bowling there from Safi. It was Raza who took an excellent, in fact, a very easy catch at short mid-wicket. And 2 wickets have now gone down. But easy catches are never easy. The more easier it gets, the more hard it becomes. And actually, a very comfortable catch in the end. AB Paro went for 0. 12 for 2, North Nawabs. It's 12 for 2. They have just lost their second wicket as we see Osaka Cricket tapes being wrapped around these tennis ball. Osaka Cricket tapes are also one of the sponsors of this UBL Amin Karachi Tape Ball Premier League Season 3. Zain Pathan walks in at number 4. And North Nawabs, it's not the start they were looking for. They have now lost back-to-back wickets. Both the openers back in the dugout. They need a cameo from someone like Zain Pathan. Well, he's capable of it. He has done it in the past. The target is not that big, but they still need 71 more runs to win. Well, he is indeed an explosive batsman. Let's see what he has to offer the team today.
In the last innings, we have seen quite impressive shots by Zain. A dot ball and a wicket in the first two deliveries from Safi. It's going to be a wide hit down the leg side. Well, they'll have to keep control, keep check on these extra runs that they are given, because with every wide or with every no ball, you end up giving away 2 extra runs. Every run counts, as it's 69 runs to win now for North Nawabs. Strong bottom hand player, Zain Pathan. He wanted to have a go at that, got an thick inside edge, and that went nowhere, straight to the wicket keeper. And one thing they need to realize is the fact that they cannot afford to play few economical overs at this stage, North Nawabs. They need to keep on scoring those runs, because you never know, chasing gets difficult, especially when you are entering the last few overs. They need a partnership. They need a big innings from any of these two batters. Both are relatively newer at the crease. Both are yet to get off the mark. Safi has been exceptional so far. Zain Pathan still have the opportunity, because it's just the second over with just 2 fielders outside the inner ring. Once again had a big swing at that. He missed it. They're going to collect a run on a bye. Once again the wicketkeeper slipped. Well, you've seen few fielders slipping tonight. Well, for me, it's always because you're not wearing spikes, but in table cricket, you don't wear spikes, so it's easier to slip because of the dew on the ground. Yeah, dew does play an important factor, especially in the last innings of the game. Here you see Hasan Chitta having a word with his bowler. Took a really good catch, Hasan Chitta, to get rid of half his bowler at long on. Mursalim, the left-hander, is on strike. It's a good thing that they've got a left-hand, right-hand combination out there, so the bowler will have to keep on changing his line and length on every delivery. He hits that. He hoiks that over mid-wicket. That's a magnificent hit from Mursalim. Brilliant way of getting off the mark. It's always hard to bowl the lefty-righty combination. This was the result of that, of 2 fuller delivery for Safi. And again, it was supposed to be a 6, because the ball was in his zone, completely in his zone. It went flat, it went hard, and it comfortably cleared the boundary over mid-wicket. They needed that big hit, North Nawabs. Few young fans also enjoying this game between North Nawabs and Gulshan Gauhars. Once again getting beaten by the lack of pace. Really good over there from Safi. Apart from that 6 that was hit of the second last ball, it has been a brilliant over. 2 done, it's 21 for 2. इसके बाद आपके पास कोई प्रोजेक्ट है कमेंट्री के लिए सिंध प्रेजेंटली हो रही थी कैंसल्ड डेफिनेटली इतना खर्चा किया ऑप्शन पे इसमें अप्लाई पे मतलब ये भी नहीं आया कि पोस्टपोन नेक्स्ट डेट पे भी आना है तो जुलाई से उन्होंने बताया था जुलाई को होनी है तो Hassan lefty, the new bowler in, another left-arm fast bowler. First power play is over, so 4 fielders are now allowed to stand outside a 30-yard circle. You can say Gulshan Gauhars have got off to a decent start, because they have managed to pick up 2 important wickets and haven't given away many runs in the first 2. 62 is still not that easy in the last 4. Zain Pathan on strike. A swing and a miss. Once again, it's that angle across the right-hander which forced Zain Pathan to miss that ball. You don't usually see in table cricket batters not getting off the mark on the first 3 deliveries. We saw Taimur Mirza getting 8 deliveries before he could get off the mark in the last innings, and that clearly was the difference why Gulshan Gauhars couldn't put up a big score.
Just get the feeling they're playing too many dot balls for my liking. Another swing and a miss. Well, he's clearly struggling, Zain Pathan. And good bowling so far from Hassan Lefty. Well, exceptional bowling actually, because he has been changing not only the length of the ball but also the bounce of the ball and the power he's offering. He's getting all that bounce from that ball and the pitch. So this is very important, and of course because he's a heighted bowler, it's easier for him to adjust the bounce of the ball. And there is nothing extravagant about Hassan Lefty. He is not that intimidating to the batter. Just runs in his run-up. But the fact that he has been able to land that ball in that perfect channel has created difficulties in the mind of the batter. Once again, a good start, 2 dot deliveries to start the over with. This time he tries to hit it, gets a thickish outside edge. It goes over the fielder at short third, and that's going to run away for 4. A fortunate boundary to Zain Pathan, but they'll take it. They'll take everything comes on the way. And not really a shot expected at this moment, but again the boundary should come from anywhere in the ground. And that's what they say, whenever you get the ball outside the off stump, swing as hard as possible. He did that, got a thick chunk of outside edge, and as a result the ball ran down towards third man boundary. But they need more of those. Not the Nawabs. They won't get a perfect opportunity like that to win a game against a very strong opposition like Gulshan Kauhar. Still halfway through the third over. They have just got 25, still needing 58. Just need to connect 1 or 2 from the middle of the bat. Good ball, a really good delivery, as an off cutter. Once again, he was very early into that stroke. Time to go once again towards sidelines, where Hina Didar has someone else with her. Thank you so much, Zishan. Now, this time I have with me Mr. Murad Iqbal, Director of Dawn Paper Mart. Thank you so much, sir, for joining us on the sidelines. कैसे हैं आप और ये क्रिकेट का मेला आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़बरदस्त है. सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करूँगा ज़ोहेर को एंड ऑल कराची के रहने वालों को. व्हाट अ ब्यूटीफुल इवेंट. एंड आई मस्ट से कि जो इनकी प्रिपरेशन है और जो मैच में गर्मा गर्मी है, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है. और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ जब मैं अभी ज़ोहेर भाई से मिला और कि जो अरेंजमेंट्स हैं, कहाँ किस कंट्री के अंदर, तकरीबन कोई 54 कंट्रीज़ में ये लाइव जा रहा है. और ना 84 कंट्रीज़ में लाइव जा रहा है. ये ना सिर्फ ये कि हमारी यूथ और हमारे अंदर जो एक एंथुसिज्म है क्रिकेट का, उसको अलाइव कर रहा है. और ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है. यहाँ पे जावेद मियादाद भी कर रहे हैं, मुश्ताक भाई भी ये सब कर रहे हैं. सो आई मस्ट से it is a house full, and what a beautiful event. Yes, indeed. Many congrats to the entire team. And you know, such platforms provide opportunities for those cricketers जो हार्ड बॉल की तरफ नहीं जा सकते हैं, टेप बॉल में करियर बनाते हैं. और टेप बॉल में भी हाईलाइट होना बहुत मुश्किल होता है क्रिकेटर्स के लिए. देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो भी हालात रहे हैं उसमें क्रिकेट जो है वो आगे नहीं चल पा रहा था और उसमें बहुत सारी चैलेंजेस थी. मगर ये जो इनिशिएटिव है, इससे ना सिर्फ ये कि हमारा टैलेंट जो कि हार्ड बॉल की तरफ नहीं जा सकता और टेप बॉल में आके वो क्रिकेट को अलाइव कराए, और यहाँ से बहुत सारा टैलेंट ऐसा निकलता है कि जो हार्ड बॉल में भी चला जाता है. सो आई मस्ट से कि दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव. इट इज़ अ कंप्लीट सक्सेस स्टोरी ऑल इन ऑल, एंड वी आर प्राउड टू हैव जावेद भाई, मुश्ताक भाई and Zohair bhai. You know, it's a great achievement. Yeah, thank you so much for joining us on the sidelines. It was great chatting with you. Now it's time to go back to the commentary box. Thank you. Thank you so much, Hina. Yes, indeed, it's a wonderful platform to all those players who couldn't showcase their skills in professional cricket. They can make a career in tape ball cricket. He swings it on the leg side. It's a flat hit. And once again, the ball has cleared the fence. Is he going to be the man of the night for North Nawabs? He has struck 2 maximums now, Mursaleen. Was pitched outside the off stumps. Look at how wide it was. Still had to fetch it away. And to get that towards that side of the ground needs some taking. Brilliant way to end the over with 3 overs done. North Nawabs are now 34 for 2.
Well, it's 34 for 2 after 3. They still need 49 more runs to win, and talk you through, it's going to be Farooq Riaz alongside Falak Sher in the commentary box. Thank you very much, Zishan Khalid and Kainat Imtiaz. As 49 runs are required for North Nawab to pick up a couple of more points here. This could be interesting. This could be an interesting low-scoring contest here. We haven't seen anything above 100. Kids are having fun as well in the THS Sports Club Moin Khan Academy. So Basit will bowl over number 4 here from the far end. Up against Zain. Well bowled, very well bowled. And could be tied at the bowler's end as if he fumbled. He had an opportunity to collect the ball and smash towards the stumps. But very well bowled indeed, just a single taken. And the combox, I welcome Falak Sher. Thank you, Farooq. Yeah, bowled pretty nicely and had the opportunity to gather the ball and throw it back at the stumps. But he started his bowling spell brilliantly, did Basit. Right arm quickie. Not very often we see him bowling, especially in this competition, but there you see a little bit of conference meeting is also going on. They know the importance of this wicket, especially Mursaleen has struck a couple of boundaries. And he's looking pretty dangerous at the moment as far as this run chase is concerned by North Nawabs. He is batting well. 14:05 is leading this partnership. And also right and left hand combination also challenges the captain to keep changes when the strike is rotated. And whereas the left-hander is also devastating here. That they know they don't have much runs on the board. That they can't afford to leak boundaries here. Basit will bowl over the wicket to the left-hander now. Fine shot, good swing of the bat, pulled away for flat 6. That is an extraordinary shot from Mursaleen. It was hardly 6 or 7 feet above the ground. It travelled to the boundary like a tracer bullet. It doesn't have enough pace to bowl that length. He was waiting for that type of length and he was very severe. Have a look at that. Good swing off the bat and got the distance. Went flat all the way. That will give him some confidence, that stroke. Mursaleen, the left-hander, he's got to keep on continue playing these strokes if they are to make a match of it. There's a man still a deep square leg, long on, long off, deep mid-wicket. The left-hander Mursaleen is super excited at the moment. Well bowled, better length and better result. Will he come back for 2? He wants to come back for 2. Could be tied, gone, possibly gone. Yes, finger goes up and Mursaleen has to walk back, he knows it. Well, the umpire didn't bother even going upstairs because that was clear, evident. Very good throw, one bounce to that fielder who did well to dislodge the bails. Didn't waste any time and up goes the finger. So it's Mursaleen who was looking good, but he's gone now for 21 of just 7 deliveries. 42 for 3 here, and what a wicket it has been. Mursaleen was a kind of player who was looking dangerous. And North Nawab desperately wanted Mursaleen to stay till the end. That is why it is so important that runs should come from both ends. You're right, Farooq. There you see, the families are here enjoying this contest. This has been the feature of this UBL Amin Presents KTPL Season 3. The families have been fully involved into it, and the people have definitely come in numbers on almost every night and have enjoyed type ball cricket here in Karachi. And of course, whoever watching us live all the way from Karachi on Jio Super and through different platforms across the globe will be definitely enjoying the scenes. There is no question about that. So Yahya is the new coming batter. After the departure of the left-hander, he makes his way to the middle. There you see.
This match can go down to the wire if extras are not conceded. At the moment, 41 runs required of exactly 15 balls here. Yahya, the next man. He goes for it. Catched it as a cry. Oh, well dropped in fact. Valiant effort by the fielder at long on. Could be run out here, and is it gone? Direct hit from the deep. Plenty of things are happening in this over. And they are celebrating. Batsman is certainly short. It's 2 wickets in 2 balls, and both are run outs. Well, certainly a drama which ended with the run out. It's all happening here. First, we saw a valiant effort, a very good attempt at the long on boundary made by Ahsan Chitta to take that catch. Unfortunately, couldn't take the catch, but he's done well. And have a look at that. This is how it ended. It's the bullseye, does the fielder, and he's a goner. He was out by some distance, I reckon. The batsman has started to walk, but umpire is still confirming, and it doesn't look convincing for the batsman. He looks short. It's a direct hit, and Pollard hit really well. He was anticipating the ball would hit directly. No interference. Finally, the official confirmation. So it's Zain Pathan who has gone for just 4. It's 43 for 4. Yahya has been joined by Shafi. 2 major blows to North Nawab here, and they can't afford to lose too many wickets here. Required rate is not a problem. Yeah, I can hold the bat is the captain Shafi Agha. But he's just pushed himself down the order. Let's see what he comes up with. Maybe looking for a heroic innings. Well bowled, smashed over to the onside. Good all-round cricket. Nicely cut off, and this time no risk whatsoever. They have already lost a couple of wickets as a result of run out, so they have been watchful now. Yeah, they can't afford to get another run out going for them. This is the last thing they need. And have a look at that scorecard. It's 4 everywhere. 44 for 4. Still 39 runs behind that target. And it's the captain who's going to be on strike. It's not a bad over by any means. Outside the off stump, he has to reload. Oh, it wasn't a commentator's curse. You're talking about a good over, and all of a sudden, missing his mark there. Bassett has bowled a wide, so 2 runs will be added to the total. We'll have to re-bowl that again. Shafi is a good player, and he wanted to keep him quiet by offering width outside the off stump with the Yorker length, and that is why he missed the radar. The margin of error is so minimal if you're targeting wide Yorker. And Shafi played well in the first innings though. Well bowled, really good delivery. No damage done, just 1 of it. 12 of the over so far. In fact, 12 gone. Over number 4 has been done and dusted. It's 47 for 4 on the board, North Nawab. It's getting tougher now for North Nawab as they need 36 of the last 12 deliveries, 18 runs the asking rate. It's still pretty gettable, 18 runs per over in table cricket. It's not a big ask. But one of these two, I think, has to take the responsibility to see the team home. Veteran journalist Nader Mushtaq on screen. So lots of personalities and lots of fans are present here in the DHS Sports Club, Moin Khan Academy, witnessing live action. And you can also catch live action on Jio Super and also various platforms available on social media
across the globe. There is no question about that. UBL Amin presents KTPL Season 3 has definitely taken table to the next level. Earlier, Naseem Rajput was confirming that this league so far has been watched by more than 2 billion people across the globe. That is something phenomenal. Khanat Imtiaz, a fellow cricket commentator and also the current women player in Pakistan team. Smash down the ground, what a strike, straight as an arrow, magnificent. Yeah, it was in the slot for Shafi Agha and he doesn't need second invitation. I've told you before when he came out to bat, this guy can hold the bat and he pushed himself down the order. Maybe for just this reason, wants to have a cameo. What a shot that is. Struck immensely hard. It's like a shot from the gun. Intentions are pretty clear from Shafi. He can be the game changer. Well, it's often said that it's good for the captains to lead from the front. I wonder if he's there to lead from the back, pushing himself down the order and taking all the responsibility on his shoulders to finish things off. Well bowled, good comeback, much fuller. No wicket offer on that occasion. It was around fourth stump. A precious dot ball here. And he needs to continue doing that. Bowler Mars just taking the ball across the right-hander, bowling it full, making sure that Shafi Agha doesn't get underneath it, because ball before we saw, when he got the opportunity to get underneath it, then he's lofted it downtown. So it will be quite easy for a batter to get underneath and loft him for runs. Full toss. Wide signal and single taken. Yahya was desperate to get strike. And Shafi responded a little bit late. But both are safely home. Yeah, missed his line on that occasion, did the bowler. Maybe was searching for that Yorker. But you got to get it right. It's very important, especially in this format. Need 27 more runs of 10 legitimate deliveries. So it's not going to be that tough, in my opinion, if Yahya and Shafi make sure that they stay till the very end. Outside the awesome off the edge, I guess. Missed by the keeper, missed by the short third. It goes for 4 valuable runs. It's a result of the wide, in fact. I just thought that is off the bat. So bonus continues to flow here in favor of North. It's 9 p.m. The joint venture of Badar Expo Solutions and Dairy Agriculture Livestock Farmers Association, that is DELFA, is being held in collaboration with the Sindh Board of Investment. And the main objective of DELFA is to enhance the knowledge of farmers and skills by adopting modern techniques. He goes for it. Yeah. Is it long enough? It's flat, and I think it's landed beyond the boundary. We have to wait for the umpire signal. I think it's got a maximum. It's a good strike. Wide of long on, well placed. And runs are flowing in this over for North Nawab. Well, that is not the length to bowl to these batters. Have a look at that. It was in the slot, and he has just whacked it all the way for the maximum. They are in the game, North Nawabs. He cleared the boundary by just a couple of inches, I guess. Yes, up goes the arms. Official confirmation. Good positive blow here from Yahya. He wants to finish for his side. 8 of 3 is a good cricketer, but he got out very early
in previous games. 1.5 overs have been bowled here. 29 for 1 for Mars. Pressure on both sides here. Just 15 runs required, and it should be like a walk in the park now, because a lot of damage has been done already from North Nawab. Down the leg side. Bowler is feeling the pressure. Now it goes down to 13 now. Now straight away go to Hina. She's down there. Thank you so much, Farooq. With me right now, I have two special guests with me on the sidelines. On my left is Chairman KTPL, Mr. Zuhair Nasir, and on my right is Mr. Mohammad Nauman Yunus, COO FPCL 4G Power. Well, let's start from the guest. Host can wait for me for the question. Sir, thank you and welcome to KTPL Season 3. How are you enjoying the match? Thank you very much. मैच तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा. आई मस्ट अप्रिशिएट ज़ुहैर दी एफर्ट्स. जिस तरीके से माशाल्लाह ये मेला सजाया है, जिस तरीके से ये काम हुआ है, दैट इज़ अनइमेजिनेबल. हम लोग भी बचपन में खेला करते थे क्रिकेट, ये जो बॉल के साथ होती थी, ये टेनिस बॉल के साथ हम स्ट्रीट्स में खेला करते थे. द कॉन्सेप्ट कमिंग के स्ट्रीट से कॉन्सेप्ट निकल के लॉन में आ जाए और इस तरीके से सजा हुआ सारा मेला हो और बच्चे ऑल ओवर द पाकिस्तान आके यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें. कंग्रेचुलेशंस टू यू ज़ुहैर, लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशन टू यू. माशाल्लाह यू हैव डन वंडर्स. जिस तरीके से आप सारा कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, जिस तरीके से लोगों को एक अच्छी एक्टिविटी पे ला के लगा रहे हो, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू एंड ऑल द टीम. उन लोगों को भी जिन्होंने इस टीम को परचेज़ किया है, जिन जिन लोगों ने इस टीम ला के इस इवेंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान. So I must appreciate you all. Yes, definitely. God bless you. Well, definitely the face behind the incredible league is Zuhair Nasir. और Zuhair Nasir माशाल्लाह आपको इतना प्रेस किया जा रहा है, आपकी क्या थॉट्स हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा नुमान भाई का कि आप ये देखें, असल हमारा जो मकसद था वो यही था कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये जो टेप बॉल की लीग है 25 करोड़ आबादी का खेल है ये, और हर बंदा इस लीग के साथ, इस टेप बॉल के साथ जुड़ा हुआ है. आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा अपना एक मिशन था, जो हमारा एक विजन था कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर वो ग्रास रूट लेवल की जो क्रिकेट थी उसको स्ट्रक्चर करें और स्ट्रक्चर करके उनको ग्राउंड्स में लेके आएँ. तो इसमें मेरे साथ मेरी पूरी टीम, जिसमें जावेद मियादाद, हारून रशीद, तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद, इन सब लोगों ने जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कंट्रीब्यूशन रहा. आज आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान की एक ऐसी हेल्दी एक्टिविटी हो गई है जिसमें हर घर से इसमें इस क्रिकेट को देखा जा रहा है. प्लस ये 84 कंट्रीज़ के अंदर ये लीग चली गई है और इसमें पूरी दुनिया से जो लोग पाकिस्तानी वहाँ बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ जो वहाँ पे जो हमारे पास इंटरनेशनल जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों की भी जिस तरीके से इस लीग के अंदर सपोर्ट्स किए, क्योंकि ये एक बड़ा नया स्पोर्ट गया उनके लिए और हमें ये दिखाना था कि पाकिस्तान में जितने भी स्टार्स निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं. तो वो ये क्रिकेट है जो आज आप देख रही हैं कि ये वो क्रिकेट थी जिसमें हम कहते हैं ये वो टैलेंट है जो हिडन टैलेंट था. आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास इन ग्राउंड्स के अंदर आ गया है, जिसको मैं ऐसे कहता हूँ कि एक होता है स्नूकर और एक होता है बिलियर्ड्स. स्नूकर के अलग चैंपियंस होते हैं और बिलियर्ड्स के अलग चैंपियन होते हैं. तो ये इंशाल्लाह वो क्रिकेट है जो हमारे बिलियर्ड्स के चैंपियन है. तो मैं अपने मैं आज नुमान भाई का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जिस तरीके से अपना फ्यूचर जो आपका पास था, जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया कि आपकी भी एक्टिविटी रही, आपने टेप बॉल खेली, तो इंशाल्लाह ताला अब हमारा असल मकसद यही है कि हम अपने सारे उन लड़कों को यहाँ पे सपोर्ट करें और हम इस क्रिकेट को मैक्सिमाइज करें और पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर इंशाल्लाह हम इसको लेके जाएं. इंशाल्लाह ज़ुहैर की बात को मुझे ज़ुहैर ने बताया था, यहाँ पे जो लड़के आए हैं हमारे बच्चे माशाल्लाह ऑल ओवर द पाकिस्तान आए हैं. डिफरेंट जितने भी विलेजेस हैं उन सब से बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे. इसका मतलब है ही इज़ गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू अ टैलेंट ओवर हेयर. माशाल्लाह लोग नज़र भी आ रहे हैं, जो अच्छे प्लेयर्स होंगे हमारे नज़र भी आएंगे, आगे भी जाएंगे. और सबसे बड़ी बात जो जिस तरीके से ये टेलीकास्ट किया जा रहा है इन डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज रियली एन अचीवमेंट. ओके सर, आई थिंक नाउ इतनी बड़ी जो कवरेज है वो कभी नहीं हुई है. ओके, थैंक यू सो मच सर. नाउ आवर व्यूअर्स आर वेटिंग फॉर द विजुअल्स ऑफ 6s and 4s. ओके, लेट्स गो बैक टू द कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, Hina Didar. Final over has just begun and Safi has been given the responsibility and he has to deliver over of the tournament. He wants to win here for his side. You're right, but during that interview we saw a couple of boundaries in the last over, just making sure that both of these batters that they see their team home. Now they can do it even in singles, so it will be very hard for these boys of Gulshan Gore to pull it back from here. But Safi has the
chance to become a hero for his side. You're right. Yahya, who's playing beautifully. What a cameo so far from him. 13 of 5. He wants to stay not out with a victory here. Interesting field set. Short cover. Short. Silly point. Edge. Nicely played. Lifted away. Could be 2 here. The chase is on. And he should come back for 3. Throw is not good enough. Good cricket from North Nawab. Intelligent batting by both of these batters. Just making sure that they get those runs. No matter how they come, this is nicely played off the back foot. Intelligently lifting it over short third and getting an easy couple. In fact, converting it into the third one as well. And you saw Falak Shed 2 closing fielders here to save 1. Missed out. And that is why they are placed. Maybe they are too close. But the main purpose is to block the singles here. But bowler has to bowl accordingly. Well, the scores are level for. They need 1 run of 3 deliveries. What do you make of it? Is there a twist in the tail? Maybe have a super over. Maybe this coming delivery will be the final ball of the innings, I guess. Nicely tapped away and job done. Mission accomplished for North Nawab. Wonderful little partnership between Yahya and Shafi, and this guy is jubilant. Sigh of relief for him, and a close encounter has come to a close. North Nawab have won by 6 wickets with 2 balls to spare. Yeah, it was gently played away for a single by the captain, making sure that they get home very safely in the end, and they won the match by 2 balls to spare. This is good intelligent batting by Yahya and Shafi towards the end of the innings, and making sure that they register their 2nd victory in this tournament. So it's a comeback by North Nawabs. Mind you, in the last couple of games they lost both of them, and that will give their confidence a world of good. And this is how they got those runs. Started the innings brilliantly, did Hafiz Pola with lusty blow, and then he was caught on the boundary. Another catch was taken at short fine, and left-hander joined the party with a couple of big hits, and he found the gap very regularly through the onside. He was very severe, anything short on the onside, and he's played quite brilliantly before he was run out. Yahya came. It was a smash. Good effort. He was dropped, and then run out happened. Direct throw from the deep. And then a magnificent shot. Possibly the shot of the day. The wide, sluggish effort that really made them pay. A good strike that went over the boundary by a couple of inches for a maximum. And that boundary, the last over, and they just stepped the ball with the soft hands to pick up a victory. Here's the batting card for you. AB Paro were taken cheaply, both of the openers, and then Muslim got 21, and in the end, Yahya and Shafi made sure that they get home safely. That's the bowling card we have. Maz and Safi picked up a wicket apiece, and Hassan and Basit remained wicketless with 25 extras and 83 for 4. North Nawab got to pick up a win. And finally, we have the match summary as Gulshan Gohars managed 70 runs in their first innings, courtesy Alias 23 runs, and North Nawabs in reply made 81 runs, got a lead of 11 runs. Gulshan Gohars in reply made 93, whereas North Nawabs chased the target with 6 wickets. By 6 wickets, they won the match and 2 balls to spare. We'll take a short break here, and when we will come back, we will take you downstairs with the presentation ceremony.
खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। The joint venture of Badar Expo Solutions and Dairy Agriculture Livestock Farmers Association, that is DELFA, is being held in collaboration with the Sindh Board of Investment. And the main objective of DELFA is to enhance the knowledge of farmers and skills by adopting modern techniques for value addition, which in turn would contribute to the national GDP. Ladies and gentlemen, I would like to invite Mr. Ahmed Faisal, Senior Vice President DELFA, for his welcome address. Please give him a huge round of applause. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, नूर अहमद साहब, नसीम साहब वाइस चांसलर और नदीम साहब, मैं इन सबको खुश आमदीद कहता हूँ। यहाँ पे आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे वैल्यू एडिशन के हवाले से जो काम हो रहा है डेयरी इंडस्ट्री में, उस सिलसिले में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और नूर अहमद साहब जो है हमारे स्टेट बैंक के डायरेक्टर्स हैं, तो इस सिलसिले में वो अपने तासुरात भी देंगे। थैंक यू सो मच। This seminar will focus on milk value addition, technology advancement in milk processing and packaging, farm management, animal health and nutrition, awareness on government policies, networking opportunities between farmers, veterinary professionals, machine manufacturers, international and local buyers of milk value added products, and all the key stakeholders. I now request Mr. Muhammad Muzammil Khanani, Vice President DELFA, to apprise us of DELFA and today's seminar. आप सब लोगों को खुशामदीद कहना चाहूँगा, बिलखुसूस हमारे मोहतरम चीफ गेस्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मिस्टर नूर अहमद साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज से प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद साहब, सितारा इम्तियाज़, और बाकी तमाम गेस्ट, आप लोगों को खुशामदीद। जैसा कि अक्सा ने बताया कि डेल्फा का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि फार्मर्स को एजुकेट करें, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें और तमाम एडवांसमेंट की जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, बिलखुसूस मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा युवास का, जिन्होंने अपना मिल्क वैल्यू एडिशन के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है पंजाब में। उसी सिलसिले की एक कड़ी यहाँ पर हमने उनको इनवाइट करा है कि यहाँ पे ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के थ्रू वो फार्मर्स को एजुकेट करें, ताकि हम जिस बदहाली का शिकार हैं, मिल्क यील्ड से लेकर न्यूट्रिशनल वैल्यू, फीड कॉस्ट, इन सैलाबी सूरत हाल जो हमारे मुल्क में है इस वक्त, उसकी वजह से फार्मर हमारा बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है। तो हमें जदीद तरीके से कुछ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स के थ्रू अपने आप को इन मसलों से निकालना होगा और फार्मर्स के साथ साथ कंज्यूमर्स के लिए भी सोचना होगा कि उनको एक खालिस प्रोडक्ट डोर स्टेप पे मुहैया हो। इसी सिलसिले में हमने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर को भी मदऊ किया है यहाँ पर कि वो हमारे एग्री टेक प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलें और फार्मर्स के लिए सहूलतें मुहैया करें। बहुत शुक्रिया। Thank you. Ladies and gentlemen, let's start with the first session of the seminar
financing and investment opportunity for farmers. And in this session, we have State Bank of Pakistan and UBL Amin on board to encourage awareness and provide networking opportunities among bank and farmers for the progression of farming. And this is for our beloved country. Their agriculture programs would help to improve the productivity, while at the same time, it would create ties of the sectors with the corporate sector. Ladies and gentlemen, I would like to request Mr. Muhammad Nadeem Khanzada, Senior Joint Director, Agricultural Credit and Financial Inclusion Department at State Bank of Pakistan, to address a worthy audience. Please give him a huge round of applause. सबसे पहले तो डेल्फा में आने वाले तमाम फार्मर्स हजरात, इदारे, उन सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी ये प्रेजेंटेशन थोड़ी सी मुख्तसर सी होगी और इसमें उन स्कीम्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा जो रिसेंटली स्टेट बैंक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ और ख़ुद भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। और उसका मकसद यही है कि फार्मर्स इन स्कीम्स के ज़रिए बेहतर तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को चला सकें, अपने कारोबार को बेहतर कर सकें और इसमें जितनी बेहतरी ला सकते हैं वो लेकर आएँ। तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़राअत के हवाले से जब हम बात करते हैं तो क्रेडिट की बड़ी अहमियत है और एग्रीकल्चर क्रेडिट पाकिस्तान में इस वक्त बेहतर तरीके से ग्रो भी कर रहा है। इस वक्त अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट की, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट को मैं आसान लफ्जों में बयान करूं कि एक क्रॉप सेक्टर होता है जिसमें फसलों के लिए आप कर्जा जात दिए जाते हैं, और दूसरा नॉन क्रॉप सेक्टर है। नॉन क्रॉप सेक्टर में वो सेक्टर है जिसमें लाइव स्टॉक भी शामिल है, फिशरीज भी शामिल है, डेयरी भी शामिल है, पोल्ट्री भी शामिल है। इसको इस तरह दो सेक्टर्स में हम डिवाइड करते हैं। और अभी तक अगर हम बात करें, इस साल में हमने कोई 1.8 ट्रिलियन का टारगेट रखा हुआ है, जिसमें तकरीबन आधा इस सेक्टर के लिए है, लाइव स्टॉक और नॉन क्रॉप सेक्टर के लिए, और आधा जो है वो क्रॉप सेक्टर के लिए है। तो अभी फ्लड के हवाले से रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत नुकसानात हुए हैं बारिशों में, फ्लड्स में। सिंध में हमारी काफ़ी सारी फसलें, लाइव स्टॉक तबाह हुए, बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी तरह बाकी सूबों में भी, KPK में, AJK में और दूसरे एरियाज़ में भी काफ़ी नुकसान हुआ। उसके लिए स्टेट बैंक कोशिश करता रहा और गवर्नमेंट के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किए, और बिलाखिर रिसेंटली आपने सुना होगा कि कुछ स्कीमों का इजरा हुआ है, कुछ स्कीमों का आगाज़ हुआ है, और उसमें ज़्यादातर फोकस किया गया है छोटे फार्मर्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीज़न 3 2023 मैच नंबर 14 की प्रेजेंटेशन सेरेमनी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी से, पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। और आज इस मैच नंबर 14 की प्रेजेंटेशन पार्टी में हमारे साथ जो ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर नोमान यूनुस, COO FPCL, मिस्टर वसीम खाजी, सैफी बुरहानी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, राहिल कुदवाई साहब UBL अमीन के रिप्रेजेंटेटिव। महाद जीशान को आज यहाँ पर होना था लेकिन उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं गुलशन गौहर के लिए जाजेब। और उसके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे वक्कारुल हसन साहब जो कि KTPL के मैनेजमेंट कमेटी में शामिल हैं, शमीम अहमद जमनाना साहब जो कि ओसाका लाइट के CEO हैं, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सदिक मोहम्मद साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के। आज का मैच गुलशन गौहर और नॉर्थ नवाब की टीमों के दरमियान, और एक बहुत ही नेल बाइटिंग फिनिश। और इस मैच में अगर मैं ये कहूँ कि 2-4 हाथ लबे बाम रह गए और गुलशन गौहर की टीम जो थी
उसने अपनी नाकामी का खुद सामान पैदा किया। क्योंकि अगर इस मैच के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊं तो 70 रन किए पहले 6 विकेट पर मुकर्ररा 6 ओवर्स में गुलशन गौहर ने, और नॉर्थ नवाब की टीम ने जवाब में 81 रन स्कोर किए 2 विकेट पर, 11 रन की बढ़तरी हासिल की। फिर 93 रन किए 1 विकेट पर गुलशन गौहर ने और अच्छी रिकवरी की। बट यहाँ पर क्रेडिट गोज टू गुलशन गौहर की जो वाइड बॉल कैंपेन थी उसको जाता है, जिन्होंने सेकेंड इनिंग में 25 एक्स्ट्रास के रन दिए, जिसमें 17 वाइड बॉल के रन थे। आखिरी 2 ओवर में 36 रन की ज़रूरत थी और अनलकी रहे माज, जिनके 1 ओवर में 27 रन बन गए और फिर कुछ बचा नहीं बचाने के लिए। आज के इस मैच में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में बहुत से लोग शामिल हैं और मैं ब्रीफली उनके बारे में बताते चलूँ। गुलशन गौहर के लिए 23 रन किए 12 गेंदों पर इलियास जानी ने, 2 विकेटें हासिल की आसिफ पठान ने नॉर्थ नवाब के लिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया 32 रन देकर इरशाद आफरीदी ने। फिर गुलशन गौहर के लिए 19 गेंदों पर 34 रन स्कोर किए तैमूर मिर्ज़ा ने, 9 गेंदों पर 14 रन किए बहादुर अली ने। नॉर्थ नवाब की अगर मैं बात करता हूं तो नॉर्थ नवाब के लिए हाफिज़ भोला ने, जिनको HP भी कहते हैं, उन्होंने इस मैच में 54 रन स्कोर किए, वाहिद ने सेंचुरी स्कोर की। फिर उसके अलावा मुरसलीन ने सेकंड इनिंग में 21 रन किए 7 बॉल पर। लेकिन जो KTPL की इंतज़ामिया है, ज्यूरी है, उन्होंने आज के मैच के बेहतरीन खिलाड़ी के लिए इंतखाब किया है 23 गेंदों पर 2 चौके 6 छक्कों के साथ 54 रन स्कोर करने वाले HP हाफिज़ भोला, जिनको FPCL के CEO मिस्टर नोमान यूनुस जो हैं वो ट्रॉफी पेश करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वसीम काजी साहब से, सैफी बुरहानी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, 5000 का चेक पेश करेंगे हाफिज़ भोला को। आइए जी हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो माजरत चाहूँगा, मैं आपको भोला कह रहा था, वाकई आपको भोला समझा गुलशन गौहर ने, वैसे नाम आपका है हाफिज़ पोला। तो ये बताइए कि क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में। आज के फर्स्ट इनिंग में आपने 54 रन किए, लेकिन जब 2 ओवर में 36 रन रह गए थे, उम्मीद थी कि आप लोग टारगेट चेस कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी और अच्छा खेले हैं। तो बिल्कुल उम्मीद थी जीतने की, क्योंकि हमारे जो टीम ऑनर हैं महद भाई और जहाज़ेब भाई और टीम कैप्टन जो है, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, लड़कों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, हम जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पोला साहब, मुझे टॉप बैक में जो हमारे प्रोड्यूसर हैं फ़रूख सुलेमान, उन्होंने बोला कि आपसे ये ज़रूर पूछें कि छक्का मार के आप बल्ला पिच के ऊपर क्यों मारते हैं? अपना एक स्टाइल है एक अपना, तो लोग लाइक करते हैं, लड़के लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा, फिर वो कमेंट्स भी आते हैं कि आप ये किया करें, और मैं फिर अपनी एक आदत बना ली है करना अच्छा लगता है। बस पिच पे ही मारा करें और किसी को ना मारा करें जी। इंशाल्लाह थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज भी हाफिज़ पोला आज के मैच के बेहतरीन खिलाड़ी। और कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीज़न 3 के आज फैन ऑफ द मैच के हमारे पास 2 अवार्ड हैं और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ पर जो फ़ैन ऑफ द मैच का 2 अवार्ड है, मोहम्मद रेहान आबाद और मोहम्मद नोमान, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं राहिल कुदवाई साहब, UBL अमीन के रिप्रेजेंटेटिव, वो, और उनके साथ होंगे वकार हुसैन साहब, उसके अलावा यूनुस जहाज़ेब यूनुस, और आप लोग भी आकर जो है ये बैठ दें। आइए, किधर हैं आप लोग? रेहान आबाद और मोहम्मद नोमान। आइए, अभी आइए। ये डॉक्टर कदीर है इनका नाम, डॉक्टर कदीर डॉन।
अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा शमीम अहमद जमराना साहब, CEO ओसाका लाइट, और आज का जो कैच ऑफ द मैच है वो भी रिसीव करेंगे हाफिज पोला। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गुलशन गौहर के कप्तान बहादुर अली से, वो आएँ और अपने कुछ ख्यालात का इजहार करें। बहादुर अली, गुलशन गौहर के कैप्टन, हार्ड लक आज आपकी, और क्या कहेंगे 2 ओवर में जब 36 रन रह गए थे तो क्या उम्मीद थी आपको? जी बिल्कुल या भाई, जो 2 ओवर में 36 रन रह गए थे तो तकरीबन हम मैच पे ग्रिफ मजबूत कर चुके थे, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं थी कि इस तरीके से वो ओवर कर जाएंगे, क्योंकि वो हमारे मेन स्ट्राइकर बॉलर है। तो पार्ट ऑफ गेम, इंशाल्लाह बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन इस बारे में आप क्या कहेंगे? खेल में हो जाती है हार जीत, अच्छी बुरी परफॉर्मेंस हो जाती है, लेकिन आज आपने 25 सेकंड इनिंग में एक्स्ट्रा रन दिए। मुरसलीन 21 हाईएस्ट स्कोरर उनके रहे, लेकिन 25 रन 17 वाइड बॉलें आपने की। जी बिल्कुल, ये भी एक अच्छा पॉइंट आप पॉइंट आउट किया है। हमने बहुत एक्स्ट्रास भी किए हैं, उसके बावजूद भी हमने मैच में ग्रिफ हासिल कर ली थी, लेकिन जो इंशाल्लाह खामियां हैं इसको दूर करेंगे नेक्स्ट मैचेस में। बहुत शुक्रिया बहादुर अली, गुलशन गौहर के कैप्टन। और अब आपकी भरपूर तालियों में आज की विनिंग टीम नॉर्थ नवाब के कप्तान शफी आगा। शफी, आज आप जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आए हैं, सर झुका कर आए हैं, लेकिन सर उठा हुआ है, लेकिन जब बैटिंग करने के लिए जा रहे थे उस वक्त बड़ा दबाव था आपके ऊपर? नहीं, दबाव तो नहीं था, बस यही सोच के जा रहे थे कि मैच जीतना लाजमी है। उस टाइम थोड़ा सा टीम प्रेशर में था, तो मैंने कहा इंशाल्लाह ताला हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 2 ओवर में 36 रन चाहिए थे, तो आपने मुरसलीन से क्या बात की उस वक्त कि क्या करना है? क्योंकि पहली गेंद पे छक्का और अगली गेंद वाइड हुई और आप भाग गए। वो 3 रन जो आपने लिए ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। जी बिल्कुल, मैंने उनको यही कहा था कि एक एंड से आपका छक्का अगर लगता है और दूसरे एंड से अगर मैं मारता हूं तो इंशाल्लाह ताला ये लोग एक्स्ट्रा भी करेंगे, और हमने रनिंग भी करनी है। तो हमने रनिंग भी की है, छक्के भी लगे, उन्होंने एक्स्ट्रा भी किया, तो हमारी जीत इसी में हुई है। बहुत शुक्रिया शफी आगा, आज की विनिंग टीम नॉर्थ नवाब के कप्तान। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 2023 यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में अब अगला मैच है मैच नंबर 15, जो थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से। हम आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। फिलहाल हम आपको स्टूडियो वापस लिए चलते हैं। पूरा सुनता हूँ, 9:30 बजे तक पूरा सुनता हूँ, उसके बाद भाई एक निकालिएगा जेब से। थैंक यू। हेलो 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 हेलो। क्यों मन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल।
All right, ladies and gentlemen, welcome back once again to DHS Sports Club, Moin Khan Academy. We're enjoying exciting matches here in UBL Amin Karachi Table Premier League Season 3. Up next is the second match of the night to be played between DHS Dabangs and Karachi Knights. Now, DHS Dabangs have been doing pretty well in this tournament as far as Karachi Knights are concerned. They've just played 2 matches, still early days in the tournament for them, and they need a lot to make up for. We have both the captains here and we're ready for the toss. Joining us from DHS Dabangs is the captain Yasir Mushtaq. Joining us from Karachi Knights is Haris Ali Khan, along with match referee Naeem Ahmed. I believe Haris Ali Khan has the coin. Haris, let's get on with it. KTPL. KTPL is the call. It's KTPL. It is KTPL. Both captains making sure they look at the coin. So, Yasir, क्या करने का फैसला किया आपने? जी बैटिंग पहले करेंगे. पहले बैटिंग करेंगे, टोटल सेट करेंगे. ऐसा लगता है कि सेट हो गया ये पैटर्न भी आपका. नहीं, अकॉर्डिंग टू अपोजिट टीम हम लोगों ने थोड़ा सा प्लान किया था, उसको देखते हुए हम लोग उस कोई तब्दीली किया आज यासर? जी एक चेंज है आज. ठीक, और वो क्या है? सलमान खान खेल रहे हैं तला रिजवान की जगह पे. राइट. यासर मुश्ताक, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच. थैंक यू. ऑलराइट. हारिस अली खान से भी बात करेंगे. 2 मैचेस खेले हैं अभी तक इनकी टीम ने, दोनों हारे हैं. अभी अर्ली डेज हैं हारिस, काफ़ी सारे मैचेस अभी बाकी हैं. होपफुली आज नया दिन है, बेहतर परफॉर्म करके आप बेहतर अपने लिए चांसेस बना सकते हैं. जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे. कोई चेंजेस किए आज अपनी टीम में? 2 चेंजेस किए हैं. असलम अशका हैं टीम में और ज़िया अफरीदी टीम में. राइट. हारिस रेहान, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच. All right, ladies and gentlemen, so word from the center is DHS Dabangs have won the toss and decided to bat first. We'll take a break here and we'll come back with live action.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 2023 मैच नंबर 15 डीएचए दबंग बमुकाबला कराची नाइट्स। लाइव फ्रॉम डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी। सैयद याया हुसैनी और आपके साथ मौजूद होंगे राना अशफाक और ये दोनों फील्ड अंपायर इस मैच में अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए। और अब से थोड़ी देर पहले टॉस सिप्तान रजा राव वसीम फील्ड अंपायर हैं और अब से थोड़ी देर पहले जो टॉस हुआ उसमें डीएचए दबंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है अगेंस्ट कराची नाइट्स। राना अशफाक को खुश आमदीद कहेंगे, ताल्लुक आपका कुंदरी से है और डीएचए स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड मोइन खान एकेडमी में मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर पहले इन्होंने रात का जो खाना है वो कराची के मशहूर बर्गर की जो है वो इन्होंने तवाज़े इनसे इनकी की गई है बर्गर से, उसके अंदर फ्रेंच फ्राइज़ भी थे। और अब राना अशफाक जो है वो चाय के मुंतज़िर थे कि इस दौरान मैंने इनको माइक पकड़ा दिया। बहुत शुक्रिया सैयद याया हुसैनी। यकीनन बर्गर भी बहुत अच्छा था और चाय भी यहाँ की बहुत अच्छी है और ये दोनों ओपनिंग बैट्समैन जो कि अच्छे बैट्समैन और हैं। ये बर्गर इतना अच्छा है मुझे अभी अंदाज़ा हुआ क्योंकि हमारे पीछे कायनात इम्तियाज़ बैठी हुई है। ये लाइनअप आप बताइएगा फिर हम मजीद बात करें। इसमें यासिर मुश्ताक टीम के कप्तान हैं, फिर बड़े बड़े कुछ नाम हम देख सकते हैं जिनमें कि वाहिद अली भी नज़र आ रहे हैं, खुर्रम शहजाद, खुर्रम चकवाल एक बड़ा नाम। जबकि कराची नाइट्स में हम अगर देखें तो बैत लेफ्टी बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, वसीम अप्पू बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं और इसके अलावा शफीकुर रहमान और अली शेर एंड ETC। जी तो एक बार फिर आपको बता दूं डीएचए दबंग के कप्तान यासिर मुश्ताक ने टॉस जीतकर आज पहले बैटिंग का फैसला किया है और ये दोनों सलामी बल्लेबाज इस वक्त पिच के वस्त में मौजूद हैं। और ये एक स्टाइल होता है बैट्समैन का कि पिच को थोड़ा सा हमवार करना। मोहम्मद वक्कास शेर पहली गेंद का सामना करेंगे डीएचए दबंग के लिए। हालांकि रोल किया जाता है पिच को लेकिन ये एक बल्लेबाज का स्टाइल होता है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर उनके साथ खुर्रम शहजाद, ये चकवाल है, ये चकवाल से हैं और ये जो वक़ास साहब हैं ये छोटा विक्की हैं। दोनों बड़े ख़तरनाक और बड़े एग्रेसिव खिलाड़ी हैं और खुर्रम चकवाल का आपने बताया था पिछले अपने स्पेल में जो हमारा हुआ था। और शफीकुर रहमान बॉलिंग का आगाज़ करेंगे कराची नाइट्स के लिए। जी हाँ, आपने बताया था कि 2013 में ये फर्स्ट क्लास मैच भी खेले हुए हैं और बड़ी तफसील और बड़ी डिटेल के साथ आपने जिक्र किया था। Here we go और लाइव एक्शन के लिए आप तैयार हैं। शफी पहला बॉल डालने के लिए तैयार हैं। मैं बात कर रहा था बर्गर की और कायनात इस वक्त हमारे कॉम बॉक्स में मौजूद हैं। और कायनात ये फ़ायदा होता है वैसे क्रिकेट छोड़ने का कि आप हर चीज़ पे हाथ साफ कर देते हैं। और फिर कायनात मुझसे नाराज़ हो गई, कह रही है मैंने कब क्रिकेट छोड़ी। उन्होंने कहा मैं प्रैक्टिस करूंगी तो इस बार आपको प्रैक्टिस पे मैं ज़रूर बुलाऊंगी। बिल्कुल मुझे बुलाइएगा, मैं आपको बॉलिंग भी करूंगा। तो शफी पहली बॉल करेंगे और विकी ने गेंद को उठा दिया है, गेंद हवा में और फील्डर से आगे गिरी और अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब पहुंचकर गेंद की रफ्तार आहिस्ता हो गई थी। इसका फायदा उठाया फील्डर ने। तो 2 रन के साथ वक्कास ने डीएचए दबंग की इनिंग का आगाज किया। यह डीएचए दबंग का डग आउट। इन्होंने पिछले मैच में भी बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी राना साहब। जी हाँ बिल्कुल, ये छोटा विक्की और खुर्रम चकवाल दोनों ही बड़े अच्छे बैट्समैन हैं और अप फ्रंट अपनी टीम को एक ज़बरदस्त और तेज़ आगाज़ देने की ख्वाहां होते हैं ऑलवेज। लेट्स सी कि आज कैसा देते हैं। इस बार ज़्यादा कुव्वत वाला स्ट्रोक नहीं था, ब्लॉक होल में किया बॉल शफीक ने और 1 रन हासिल किया। तो कुछ स्लो स्टार्ट डीएचए दबंग का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए। और अब खुर्रम शहजाद चकवाल, जिनका ताल्लुक चकवाल से है, अब से 10 साल पहले इन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। नंबर 6 पर बैटिंग की थी इन्होंने और 29 रन स्कोर किए थे और फिर टेप बॉल में इन्होंने किस्मत आजमाने का फैसला किया और पहली गेंद को ऑन साइड पर धकेल दिया है। फील्डर यहां पर मौजूद हैं, रन बनाने का मौका। चहलकदमी के अंदाज में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया और बात 1 रन तक की महदूद रहेगी। तो शफीक का निस्बतन बेहतर ओवर और अच्छा आगाज।
जी हाँ, और आपने खुर्रम चकवाल की बात की तो टेप बॉल में इन्होंने किस्मत आजमाई और वहाँ कामयाबियाँ और कामरानियाँ इनकी मुंतज़िर थीं और उनका ताज इन्होंने अपने सर पे रख लिया और अब तक रखे हुए हैं। बहुत अच्छा खेलते रहे ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, जितनी तारीफ़ करें इनकी कम है। वक्कास छोटू सामना करेंगे शफीक का, और ये बल्ला गालिबन हाथ से निकल गया या टूट गया है, लेकिन 4 रन उन्होंने हासिल किया। जी बिल्कुल, हैंडल से निकल गया ये बैट। या टेप बॉल क्रिकेट में भी ऐसा होता है, हार्ड बॉल में तो हमने बहुत ऐसे मनाजिर देखे हैं। जी हाँ, एक तरह से एक बड़ा कॉमिकल ये सीन है इस वक्त। ये देख सकते हैं हैंडल उनके एक हाथ में और बैट एक हाथ में है। ओह माय गॉड, बड़े जोर से बैट थ्रो किया, सो मच सो कि गेंद तो बाउंड्री से बाहर चली गई मगर बैट भी ट्रेवल कर गया दूर। और अगर कहीं ये गली मोहल्ले का मैच होता हमारा ज़माना तो कोई खिलाड़ी बैट को चूम के कहता कि आप आउट हो गए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन रन जरूर हासिल हुए हैं। क्या बात है, तो अब बल्ला तब्दील करना पड़ेगा वक्कास छोटू को। चौका लगा और बैट उन्होंने तब्दील किया, और ये आप देख रहे हैं जनाब वीआईपी इंक्लोजर, जहां नॉर्थ नवाब के ओनर हैं जीशान, वो केक काटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि जरा रुक जाएं, एक गेंद होने दें। और इस बार वक्कास छोटू ने गेंद को उठा दिया हवा में और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। बड़ा खूबसूरत शॉट, छोटा विक्की खतरनाक बैट्समैन है। इस मरतबा शॉर्ट एंड राइजिंग बॉल थी, हम देख सकते हैं, और ऑफ स्टंप से बाहर से घूम के बड़ा जोरदार छक्का। और ये केक कट गया है, छक्का लग गया और केक कट गया। जैन को बहुत बहुत मुबारक हो इनकी सालगिरह और केक सेरेमनी। मुश्ताक मोहम्मद पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और 1999 वर्ल्ड कप के कोच भी यहां पर मौजूद हैं, और एक और छक्का लगा दिया है वक्कास छोटू ने। बैक टू बैक छक्के। बड़े खतरनाक मूड में हैं ये, बॉलर्स पर पूरी तरह से हावी हैं और वहाँ बहुत सारे दोस्त जो हैं वो केक पर हावी हैं, और जीशान साहब की जो केक सेरेमनी है, केक कटिंग सेरेमनी, उसे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये बल्ला टूटना जो है वो वक्कास छोटू के लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने बल्ला तब्दील किया तो 2 छक्के लगाने में वो कामयाब हुए हैं। जी हाँ, बल्ला जिस अभी आपने 99 का जिक्र किया, उसमें एज कोच थे, तो वहाँ सईद अनवर के लिए बैट तब्दील करना अच्छा साबित नहीं हुआ था। डेमिन फ्लेमिंग ने मुझे कायनात की छोटी बहन लग रही है। तो 1 ओवर में 20 रन, 2 छक्के, 1 चौका, बड़ा अच्छा ओवर रहा डीएचए दबंग के लिए। और वक्कास छोटू अब पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच हैं, और नॉर्थ नवाब के खिलाफ उन्होंने 18 गेंदों पर 34 किए थे और 16 गेंदों पर 40 रन किए थे। और ये हैं मुश्ताक मोहम्मद, 1999 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे। वसीम अकरम की क़यादत में पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर फाइनल में नाकामी का सामना करना पड़ा था। और केक मुझे लगता है बहुत मजेदार है ये, क्योंकि छोड़ नहीं रहा कोई केक को। जी, और नसीम राजपूत अब नबर्द आजमा है केक के साथ। उम्मीद करते हैं कि कमेंट्री बॉक्स में इसका कुछ हिस्सा पहुंच जाए। चलें जी, मैं अभी कहता हूँ ये काम भी कायनात को ही लगता है करना पड़ेगा, सिर्फ 1 फ्लोर कायनात, आपको नीचे जाना पड़ेगा। जिया है ओवर करने के लिए और उनका इस्तकबाल किया है खुर्रम शहजाद चकवाल ने चौके के साथ। बड़ा उम्दा शॉट, फ्रंट फुट पे आकर गेंद को एक तरह से ड्रिल किया है ऑफ साइड में, ये हम देख सकते हैं। खुर्रम चकवाल की फ्रंट फुट बहुत अच्छी थी, मिड ऑफ के लिए कोई मौका नहीं। वैसे तो राना शहजाद कुछ 24 रन इस वक्त हैं, लेकिन आखिरी 4 गेंदों पर 20 रन बने हैं, 2 चौके और 2 छक्के। बस वो बैट टूटना ही इनके लिए खुशाइन साबित हुआ है। जिया इस ओवर में दूसरी मर्तबा, और इस बार गेंद हवा में, और क्या ये इस मैच का तीसरा छक्का होगा? जी बिल्कुल। खुर्रम चकवाल अपने रंग में है, बिल्कुल एफर्टलेसली हिट किया है, कोई बहुत ज्यादा कुव्वत सर्फ नहीं की, और स्टिल बड़ा खूबसूरत कनेक्शन। और ऐसे लग रहा है कि मुकाबला चल रहा है वक्कास छोटू और खुर्रम शहजाद चकवाल के दरमियान, क्योंकि पहले ओवर में वक्कास छोटू ने जो छक्के चौकों की बरसात की है, अब खुर्रम शहजाद चकवाल जो हैं वो पूरे रंग में दिखाई दे रहे हैं। 30 रन तक पहुंच चुकी है डीएचए दबंग। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 मैच नंबर 15 लाइव फ्रॉम डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी।
8 गेंदों पर 2 छक्के 3 चौके लग चुके हैं। इस ओवर में 10 रन। और इस बार बात 2 रन तक महदूद रहेगी। सुख का सांस लिया होगा जिया ने, क्योंकि पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का। ये बड़ी राहत होती है बॉलर के लिए कि अगर 1 या 2 रन बने, क्योंकि अमूमन चौके और छक्के ज़्यादा लगते हैं। ये शायकीन क्रिकेट हैं जो मौजूद हैं मेन स्टैंड में, जो कि जिस एंड पे हम बैठे हैं वहाँ से हमारे बाएं जानिब है इनफैक्ट, और वहाँ पर काफ़ी तमाशाई जो हैं वो मौजूद हैं और मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको खुद जाना पड़ेगा केक लेने के लिए। जी हाँ, महसूस तो यही हो रहा है। बेकरी से लेना पड़ेगा आपको केक, क्योंकि केक तो खत्म हो चुका होगा। और इस बार गेंद उनके पांव पर लगी, लेकिन लकी रहे कराची नाइट्स की टीम के खिलाड़ी, क्योंकि बॉल ने आउटफील्ड में बहुत तेजी से ट्रेवल नहीं किया। लेग बाय का 1 रन। और कोई अच्छी बेकरी आपको सजेस्ट करना पड़ेगी, क्योंकि आप कराची से हैं, मैं तो कुंदरी से हूँ। नहीं, मैं खुद लेकर आऊंगा आपके लिए केक। आप कोशिश कर लें, 2nd फ्लोर पे जाएं, अगर केक मिल जाए आपको तबरुक के तौर पर तो वेल एंड गुड, वरना फिर मैं खुद लेकर आऊंगा। बहुत शुक्रिया सर। मैं बल्कि ज़्यादा ये चाहूँगा कि आप ही लेके आए, ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और जिया के इस ओवर में जो 5वीं गेंद थी उसको उठा दिया है, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। वक्कास छोटू का यह 3रा छक्का। दोनों ही बैट्समैन, जिस तरह अभी आपने मेंशन किया कि शायद एक दूसरे के साथ किसी रेस में हैं कि कौन छक्के लगा। There we go, बड़ी ताकत के साथ छोटा विक्की का खूबसूरत छक्का। इसको कहते हैं कि आप अभी संभले नहीं हैं और आप पे छक्के चौकों की जो है वो गोलाबारी शुरू हो गई है, और डीएचए दबंग ने कुछ ऐसा ही किया है। और एक और शॉट छोटा विकी का, क्या ये भी छक्का होगा? जी बिल्कुल, 4था छक्का इस मैच में छोटा विकी का। जी हाँ, इनके नाम से डिसीव मत हो जाएं, इनके नाम से धोखा मत खा जाएं। इनका नाम ही छोटा विक्की है। स्ट्रोक्स बहुत बड़े बड़े हैं इनके पास, उनमें से एक ये है। बहुत उम्दगी के साथ गेंद को हिट किया और गेंद हवाई रास्ते से फिर नीचे उतरती हुई 6 रन के लिए। 2 ओवरों में 45 रन, गुड स्टार्ट। जो लास्ट मैच हुआ है गुलशन गौहर का नॉर्थ नवाब के साथ, आखिरी 2 ओवर में 36 रन चाहिए थे, और 1 ओवर में माज ने 27 रन दे दिए। और यहाँ पर तो शुरुआत ही बड़ी जालिमाना और कातिलाना हुई है। 45 रन बन चुके हैं 12 गेंदों पर। बिल्कुल आपने सही कहा है, बिल्कुल ही जालमाना अंदाज है दोनों बैट्समैनों का। खुर्रम 13 और वकास 31 रन पर, और किसी बॉलर को खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं। आओ देखा ना ताओ। और एक बात जो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है राना साहब, वो ये कि पिछले मैच में 17 वाइड के रन दिए थे 2nd इनिंग में गुलशन गौहर ने नॉर्थ नवाब के अगेंस्ट, लेकिन यहाँ 12 गेंदें जो हैं वो लीगल डिलीवरी हुई है। कोई एक्स्ट्रा बॉल अब तक नहीं की है कराची नाइट्स ने, लेकिन वो रन्स के आगे बंद बांधने में भी नाकाम रहे हैं डीएचए दबंग के अगेंस्ट। अली शेर अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं, दाएं हाथ से तेज गेंद करने वाले बॉलर। बड़ी भारी जिम्मेदारी होगी, रन्स के फ्लो के आगे बंद बांधने में कामयाब रहते हैं या नहीं रहते। बिल्कुल, जो कि 2 बॉलर्स के खिलाफ रन्स बड़ी तेजी से बने हैं। डीएचए दबंग्स के मेंटोर हैं एक तरह से नवाब, जो कि यहाँ मौजूद हैं, और ये भी बड़े पुराने और सीजन्ड जो हैं वो हैं, और हमेशा सपोर्ट के लिए मौजूद रहते हैं। 7 गेंदों पर 31 वकास छोटू के, और 5 गेंदों पर 13 खुर्रम चकवाल के। 45 रन 2 ओवर के बाद। डीएचए दबंग टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए। अली शेर, और अच्छा आगाज कहूंगा मैं इसको, क्योंकि गेंद उनके पांव पर लगी और रन नहीं लिया गालिबन। बिल्कुल आपने सही कहा, ये अच्छा आगाज है, और ये टेप बॉल में डॉट बॉल करने का सबसे बेहतर तरीका भी है कि आप किसी न किसी तरह गेंद बैट्समैन की टांगों पे मार दें, जो कि मारी उन्होंने। और एक और अच्छा बॉल, इस बार जल्दी चले गए थे। अली शेर ने राहत का सामान पैदा किया है कराची नाइट्स के लिए, क्योंकि पहली 12 गेंदों पर 45 रन और 2 डॉट बॉलें किसी नेमत से कम नहीं है। 2 चौके और 5 छक्के अब तक लग चुके हैं इस इनिंग में। बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ी ब्लेसिंग है इनके लिए ये। और इस बार उठा दिया है फील्डर गेंद के नीचे।
It's 10 p.m. जारहाना आगाज और हमारे वो देखने वाले जिन्होंने टेलीविजन सेट अभी ऑन किया हो, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 के बारे में जानना चाहते हैं तो ये थोड़ी सी रिवायती क्रिकेट नहीं है टेप बॉल की। यहाँ पर 6 ओवर की एक इनिंग है और लेजेंड जावेद मियादाद जो कि इस लीग के साथ वाबस्ता हैं, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पेश किया कि एक इनिंग का मैच नहीं होगा बल्कि 2 इनिंग का ये मैच होगा। तो पहले बैटिंग करती है टीम, अरसलान जमशेद अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं खुर्रम शहजाद चकवाल के जाने के बाद। तो जो जावेद मियादाद का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप 2 इनिंग खेलेंगे ताकि सामने वाली टीम को बाउंस बैक करने की इजाजत हो। अरसलान आए हैं जो कि अच्छी बट के नाम से मशहूर है। अच्छी हो बुरी हो जो भी हो लेकिन बल्लेबाजी जारहाना होनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, ये जैसे निक नेम्स का हम जिक्र करते ही आ रहे हैं इस पूरे इवेंट में। अब इनका नाम तो अरसलान जमशेद है मगर निक नेम इनका अच्छी बट है और बट जाहिर है कि इनकी कास्ट है और अच्छी इनका निक नेम। आपको क्या कहते हैं वैसे कुंदरी में? राना अशफाक को राना जी। और आखिरी लम्हे तक गेंद पे निगाह रखी, टाइमली इस गेंद को खेले हैं, फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं। 2 रन आसानी के साथ ये दोनों बैट्समैन हासिल करने में कामयाब रहेंगे। तो वक्कास छोटू ग्राउंड के चारों जाने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करते हुए। ये भाई एक बात तो तय है कि सब अच्छा तो नहीं कहते मुझे बाकी का भी कुछ कहते हैं। आप काम ही ऐसे करते हैं, आप जमीन पे मिर्ची उगाते हैं तो मिर्ची किसको अच्छी लगती है? लेकिन मिर्ची एक बहुत बड़ी ट्रेड है कुनरे की और कुनरे में एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी है। एक और शॉट वक्कास छोटू का, गेंद फील्डर से आगे, फील्डर गेंद से पीछे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन और इसी के साथ 50 रन मुकम्मल हुए डीएचए दबंग के 52 3 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। तो इस तरह 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वकास 37 रन पे, अरसलान 1 पे और तब्दीली हो रही है कमेंटेटर्स में। याया हुसैनी और मुझे रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कायनात इम्तियाज़ और फलक शेर। Thank you so much, Rana. And here we are, 3 overs done and dusted. It's 52 for 1. DHA the bunks batting first. And Waqas has been the standout performer so far. Imtiaz Imti is the bowler to continue the proceedings for Karachi Knights. There you see the VIP enclosure. And with me is Kainat Imtiaz. Good evening, Kainat. Good evening at yet another game. Interesting game. And it becomes more interesting if you see strokes like that. He has really pounced on it, down on one knee, and it's Arslan, the batter. He's known for his big hitting, and that was a clear evidence of that. What a great cricketing shot it was. Throwing his arms towards the ball, and that too with on the merit of the delivery, completely outside the off stump. Bottom of the bat on that occasion. Had to reach for that. Good bowling actually by Imtiaz, making him reach for that line after being belt for the maximum. There you see, he's an actor and he's a lookalike of Imran Khan, former Pakistan cricket team captain, in 1992 the World Cup winning team's captain. Outside the off stump, another wide.
Well, it's the most difficult line actually to bowl on the wide line. And that's the safest option too, because it's harder for the batsman to reach that ball, and again harder for the bowler to deliver that delivery. Look at that, he's bowling too many wides, and that too way outside the off stump. Seems to be losing his line-up control a little too much, Kainat. Well, yes, he should change his plan of action and try something different rather than only bowling on that line. Maybe a little short of length on his body, onto his ribs, so that it gets difficult for him. He's normally very good with his lines, his Imtiaz. This is what he was looking to achieve. A slower in pace, nicely bowled, got the nick and got the result in his favour. He gets his man in the end. Arslan has to take a long walk back to the dugout. Very important breakthrough. This is exactly what he wanted to do, and he got that wicket, that important wicket of DHA Dabang. An easy catch for keeper. And if you would have noticed, Kainat, it seems to have darted in and then sort of held its line. So it was a good delivery. That's why it took the outside edge and makes Arslan Beg go back for just 7. Now you see quite a few families in, quite a few spectators have turned up, as usually they come to watch this UBL Amin presents KTPL Season 3. People are definitely enjoying. And here's our colleagues in the ground commentary. Muhammad Umar is going to be the new batter, and he's going to be on strike. Oh, he tries to go big, miscues it. And it's a very good catch taken. It was very easy in the end. So a couple of wickets on the trot here for Imtiaz. He's turning it on here. Well, definitely he is. And I think there's something in the pitch that's ripping the ball. It has been a low-scoring match, the first one. And I think this will be too. Again, did not hit the middle of the bat, and the batsman was not balanced at all. Yeah, seems to have just hold up on the surface that delivery. Umar just come and gone for a golden duck, 62 for 3. So here we are, the breaking news from the Middle East that Imti, the bowler, is on a hat-trick. And it's going to be Salman Khan to avoid the hat-trick and to face the music as well. Because Imtiaz is definitely bowling with his tail up. And this is how you deal with the hat-trick ball. He was down on one knee, smashing it down to make a wicket for a single. Well, that ball though was in the middle. If missed, could have been bowled. But I got a bowl shot by Salman to start off with a single. And whenever you say Imtiaz, I just can't help but think that it's my dad bowling maybe. Imtiaz and Imti both are his name. Well. That got our fellow commentator interested, that name.
Nicely ball. Look at that. He had to wait for that. Though he's there for just 10 deliveries and has made 37, 38 runs so far, has Waqas Sher. But still he had to wait for that delivery. It means that he's really mixing it up, the bowler. 4 done, it's 64 for 3. There you can see the global broadcast across 84 countries in the world. Africa XP, Villa TV, Sub-Sahara, Sahara, and of course, live on Jio Super, Pakistan's first sports channel. This telecast has been watched worldwide. There is no question about that. Well done to the management of UBL Amin presents KTPL Season 3. So Ali is going to be the bowler to bowl his second over, bowled a brilliant first over, went for just 7 runs and took a wicket as well. He will be bowling to Waqas Sher. Oh, I got the feeling that was in the slot, but just couldn't get the connection. Waqas Sher, he went for a big heave. It is not going to be easy to pitch on this bat. It feels like it's hardball cricket and the ball is moving both the sides. Well, this game is different as we can see swinging from the ball. Foul toss, didn't get the timing on that occasion, but he goes downtown. Fielded well by the fielder down there. Only 1 run added to the total. Well, I get the feeling, Kainat, because we are just on the bank of the sea. So maybe some sort of breeze is blowing across in between patches. There you can see the dugout of DHA Debangs. So maybe that could be the effect, that the bowling has become a lot more effective at this point in time. Because even if you bowl full toss, the timing is not there whatsoever. Oh, the fielder makes a mess of that one as well. He had ample time to get underneath that one, but just couldn't get to the ball. He was there already. I don't know why didn't he catch that ball. And it was mistimed, completely mistimed. It was a clear chance for them to catch it. He lost it in the air. He was never sure where that ball was going to land. Overran on that occasion, did the fielder. Full toss, gets a little tickle. And it's into the boundary for 4. Waqas Sher gets a boundary. Boundary after a long time here for DHA Debangs. I think we're going to see some boundaries on the full toss deliveries only. And again, edged it towards the leg side. Boundaries should come from wherever that can be. It was a poor line by the bowler. Full toss on the legs. Just needed a little tickle, and this is what it got. Oh, big swing attempted through the offside by Waqas Sher. He's getting beaten. He's trying to go big, but he's not getting the connection. Bowlers are having the time of their life right now with the tape ball. Different, but yes, they must be enjoying on the crease. Well, I tell you what. Oh, this time he gets a full toss and he gives it a big heave and he clears extra cover. That's a good looking shot. What a way to end the over by Waqas Sher. It's gone all the way, 76 for 3 after 5. And again, a full toss delivery, a half volley towards the extra cover. The area was fine, but I would say the runs are only coming on the short, either short deliveries or the full tosses. It was a good finish to the over. The last over by Waqas Sher, the batter. Big 6 over extra cover. Makes him move to 49.
eyeing up for yet another half century, and he will have a chance if his partner gives him strike in this over to make his half century. Shafiq has been the bowler now, which has been given the ball to bowl the last over. He managed 76 runs up till now. Let's see how many they can get in the last over. Salman's responsibility will be to give the strike back to Waqas Sher. That is very important because he's the senior partner and he's seeing the ball well. Though he's got beaten on twice in the last over on a couple of occasions, but merely because he's a tiny fellow and he doesn't have that much of a reach. That's why outside the off stump struggles a bit. He goes downtown. Why would you give strike to your partner when you hit the ball like that? That's a maximum to start the last over. Very well said. When you can hit sixes, it's your turn to strike then. It was a very poor delivery, I would say. A very short pitch and outside off stump. Batter has all the time to hit it wherever he wants to. That's what he did. Now that was over the side screen. Brilliantly timed. Nicely bowled this time, coming back, bowling wider, outside the off stump, and here we are. Strike is going to be with Waqas Sher now. Looking to make another half century here is Waqas Sher on 49, not out. And a mini conference meeting as well. We can see Karachi Knights boys getting together. Shafiq has huge responsibility on his shoulders because he will be bowling to inform Waqas Sher. Well, it will be important for DHA Dabangs to get maximum runs on the board, as Karachi Knights can also bat. He goes big, but it's good enough, the connection, to earn him a single and get to his half century. Well played, Waqas Sher. Another half century for this talented young cricketer from Multan. Was not a very easy pitch to bat on, but he managed somehow. And the thing is, he has been punishing all the bad deliveries, and that's what a batter needs to do, especially when you're playing tape ball. You also punish the good ones. So he's doing a very good job for his team. Yeah, he's got two after a flyer. But in between, some good bowling he had to face. But he's made sure that he stays there. Well compiled half century for him. He goes big. He goes massive, does Salman. And he clears long on by a long way. That's out of here. Please get the ball back. But he's using all of his height, getting the ball from down and hitting it outside the park. And again, a great shot by Salman. No one's stopping him. Look at how far he has hit that into the car parking. Amazing blow. Well, he has a go at that one as well. Outer's edge this time. We'll just give him a single down to short third. Well, I would say it's fine. You hit a six and then go on the other side and let the other batter face and hit more sixes. But I tell you what, he was livid with himself when he came down to the non-striker end because he knows this is going to be the final ball of the innings and he needed to maximize that. But it's also not that bad when you have somebody like Waqas Sher facing the last delivery, who is already batting on 50 not out of just 16 deliveries. Last ball coming up. Oh, well bowled. He was way early into his stroke, was Waqas Sher. And they scampered through for a leg by, and this is how they finished things off in this innings, in their first innings. Dabangs made 92 of their 6 overs for the loss of 3 wickets
Brilliant bet. Waqas Sher making half century of just 16 deliveries. Very well played. And he has been the standout performer for the side. Well, he survived very well during this situation and showed his character for his team. His team needed it this time. And DH Dabang are on the road. And here are some of the highlights. Waqas Sher from the wood go. He lost his bat. And since then, he never looked back. They ball short at him. And they ball in the slot. And he has punished them in between. KC2 hit a big one. But Waqas continue his merry way. Throughout this innings, he has hit some lusty blows, some big hits. And Casey was in the air. And he was well caught by Ali the fielder. Through the covers, we have seen good strokes in between. This time it was Arsalan Achi who hit a big one and then got out. The bowler had the last laugh. A couple of wickets on the trot for the bowler. And Waqas was just unstoppable throughout the innings. A big hit downtown we saw. But it was Waqas's show, I would say, just towards the end of this innings. And here's the batting card. Waqas Sher, the standout performer, making 50 runs of just 17 deliveries, 13 and to Khurram and Salman made 16. Managed 92 of their 6 overs. And the bowlers went the journey, but Imtiaz Imti was the pick of the bowler. Just took two wickets and a wicket to Ali as well. So we'll have a change in the commentary for the next innings. It's going to be Farooq and Zishan to take you through with the start of this first innings. Thank you very much, Palak Sher and Kainat Imtiaz. DH Dabang just finished their innings and they got to 92. And exactly 6 overs. The fireworks from Waqas Sher, who played beautifully for his half a hundred. It's a lovely view of DHS Sports Club Moin Khan Academy, surrounded by a building and a movie theatre. A lovely evening here in Karachi. Conditions are quite perfect for cricket. And now we all expect another wonderful game of cricket. And in the previous game, Gulshan Gauhar got beaten by North Nawab in a close encounter. And in the com box, I've been joined by Sushant Khalid. Welcome once again. Yeah, thank you so much, Farooq. 5 innings have been completed already. We haven't seen a side going past 100 tonight. It's a bit of a rarity. But nevertheless, a wonderful knock by Chota Wiki in the first innings, scoring a half century of just 17 deliveries. That's what counts. Your big players need to step up, especially when it's the crunch time of the tournament. DH Dabang scoring 92 runs for the loss of 3 wickets. I still believe they've got a very good score, considering the fact that Karachi Knights have been struggling so far in this tournament. Well, they've just played two games, still pretty early days for them. But they need to step up now. They need to show that they are here to win this game as well. Not only to win this game, but they are here to lift the trophy. Yes, absolutely. They are certainly capable. And the openers are also very excited. They want to deliver something for their side, and this could be the evening here. In the previous game, Gulshan Gauhar was expected to win, and they got restricted by North Nawab. In the end, North Nawab picked up a good win here. Now it's time for Karachi Knights to make some impression. Yeah, two things that did not go in the favour of Gulshan Gauhar in the previous match was the wonderful fielding effort from North Nawab, as we see the opening batter Usman Jan of Karachi Knights, and his partner at the other end is going to be Ubaid Lefty. Now Ubaid Lefty has in him, he has the ability of hitting the long ball, and he has done that as well. I mean, he has got few starts in this tournament, just has not been able to convert them into big scores. Umar Shahzad, known as Umri Praser, well, he's having a very good time so far in this UBL Karachi Table Premier League Season 3.
he starts the proceedings and he's a genuine wicket taker as well. So we're all set for the first ball of this second innings between DH Dabangs and Karachi Knights. Usman is going to be on strike. Umri Pacer is going to come around the wicket first up to the right-hander. Full toss outside the off stump and just played with soft hand, interestingly. Tried to heave, I think it changed his mind in the last second because not much length he was offered to deal with. Yeah, definitely he was in two minds. He might have been expecting a delivery onto the pads or onto the stumps, but it was wide outside the off stump. That's why he had to check his shot in the end. But now it's going to be Ubaid lefty on strike. Umri Pacer will continue to come around the wicket. Well, if he does that, it might prove to be a little easier for Ubaid lefty because we know he likes to swing everything on the leg side. Right and left in combination for Karachi Knights. Well bowled again. Once again he checked his shot and in the end just tapped it towards a short third for one. So watchful start from both the batters. Yeah, indeed. I don't think they're in a mood of gifting their wickets early tonight, Usman and Ubaid, and it's a very good move as well. Because they can even afford to play an over like that where they can just score 8 or 10 runs and then they can go after the other bowlers. We have seen that in the past as well. One over does not go in the favour of the batting side, but they usually come back. Ran for the big shot, under edge, straight to the keeper. He missed out again, Usman. Yeah, once again, Umri Pacer doing the right thing, keeping it outside the off stump. He was just trying to use his hand on that occasion. Usman getting a thickish inside edge and the ball going straight to Yasir Mushtaq behind the stumps. So good start so far from Umri Pacer. Hasn't conceded a boundary. Karachi Knights on the other hand will be looking to get a healthy lead against DH Dabangs so that they can put the opposition under some sort of pressure. He hasn't offered real wit, Umri Pacer. He's got the pace, got the long run up, but also so far he has been disciplined. Got him! Inside edge onto the stumps and Umri Pacer has struck here for DH Dabang. What a start that is with the ball. Well, it was on the cards. Umri Pacer was testing both these openers outside the off stump. Once again, it was the angle that he was creating. Usman going for that big heave down the leg side, getting a thickish inside edge and the ball rolling onto his stumps. So an excellent start is for DH Dabangs and for Umri Pacer. They have drawn the first blood. Usman Jan walking back. It's 2 for 1. Well, they've turned out in huge numbers tonight, the crowd. It's a weekend's eve and we can expect more and more crowd to build up as this match progresses. Yes, we always see the Chan, a larger number of people come to the stadium in the second match of the day. And they're expecting something exciting here. So the start has been brilliant. Umar has struck here for his side in the fourth ball. Inside edge onto the stumps and now that has brought Haris, has come out of the middle. The skipper of Karachi Knights. Yeah, he has come out to bat at number 3 tonight, Haris Ali. Once again, not having a decent time with the bat. Gone for the big shot here. I think there was an edge. It fell short. The bowler Umar is so excited. Yes, you're right. He is really struggling, Haris, in this tournament. Some young fans as well enjoying this game tonight. It's a lovely sight to see. I mean, it's such a secure area when you talk about Defence Housing Authority, and to have a stadium like that, like this, in the vicinity of this wonderful city. I mean, it's a blessing in disguise for people who are living nearby to come out here and enjoy this wonderful tape ball cricket tournament being organised. Went for the big shot. He connected, but found the fielder. What an over! Just 3 off the over. 3 for 1. Yeah, they have spotted themselves on that giant screen. Always a wonderful feeling to see yourself being shown on the camera. Meanwhile, a very good start this from Umri Pacer. Got a wicket, conceded just 3 runs. Karachi Knights straight away on the back foot.
I'm away Salim, the right arm fast, is sharing the new ball. That's an interesting way to clear the boot. Quite a few times we saw from Haris, he missed a big shot there, so it's very important just to tap the ball and give a strike to a bad lefty who is far more devastating and pretty much in form. Way down the leg side, it's a bonus. Yeah, it was ill-directed, that first delivery from Awais. He's had a decent tournament so far. Usually he has been given the ball during the crunch times towards the latter stages of the innings, but now he's got the new ball, bowling the second over of the innings when his side is in a very good position. The opposition Karachi Knights, but they're still trailing by 87. The captain is out there already at number 3. Ubaid lefty hasn't had much of the strike so far. Oh, he's missed it. Loopy ball outside the off stump and wrong shot selection. It didn't cover the line at all. It's a dot ball again. Pressure building up. Yeah, should have definitely looked to drive that ball on the offside. Instead, he went for once again a wild slog down the leg side and got beaten. It's good these two batters are having a word with each other at the center of the pitch. Must be selling to each other that play the ball on the merit. Try to time the ball and then look to slog. Absolutely, Zishan. I also mentioned in the previous game, there is no harm to just tap the ball and get a single in tape ball cricket. There is absolutely no harm. Yes, indeed, and that's why I think Gulshan Gohar's their middle order batters, Ilyas and Raza, has done the right thing. They try to play the ball on the merit, and it's no harm. Even if you get a boundary instead of a 6, it's no harm. Still, you're getting 4 runs on a delivery. As we see, the dewy conditions are making it difficult for the bowlers on their run-up. Awais was just drying the base of his sneakers with the towel. The fans watching themselves on the giant screen make them much happier. Swing and a miss again. He didn't pick the pace, and once again wild swing from Haris. What's happening out there with him? Well, I was told a few nights ago that Haris, who is the captain of Karachi Knights, has played first-class cricket. Now, when a player has already played professional cricket, you can expect him to at least use their feet towards the start of the innings. Whereas he's just looking to slog everything on the leg side. There is minimal feet movement there from the right hand, and that is the reason why he is being beaten outside the off stump. Went for it, big shot. What a connection this time. Over the rope for a maximum here. Good strike from Haris. Yeah, in the previous deliveries he was getting beaten by the lack of pace. This time Awais offered the pace and Haris was waiting for it. Once again a swing down the leg side. It was over mid-wicket. He was waiting for it. Finally connected it and deposited it over mid-wicket for a maximum. It was within the stumps. He cleared his front leg and a wild swing, but on that occasion it was a fine connection. That will give him much confidence, and he should carry on the way he played today in on the previous ball. And for the big shot again, a hit wicket, I think. Yes, for the first time we have seen the batsman got out, hit wicket. He played a pull shot. It's a pretty good shot indeed, but it doesn't matter in the end. Haris has to walk back, out, hit wicket. Yeah, it took us 8 days to witness a batter getting out on a hit wicket. Usually they bat so much deep inside the crease. He middled it to perfection. But look at his left leg. While swiveling down the leg side, he lifted his left leg and then managed to hit the stumps. A funny dismissal indeed, and that too for the captain. He not only dislodged the base, he smashed the bills, all 3 stumps, and a very prominent sound we heard. And he's absolutely gutted with himself. One shot for 6, the other shot was also very good. But why did he make a contact with the stumps? 7 for Haris, 11 for 2. Well, one thing we are sure about, which team is the crowd's favourite? It's DHA the Bungs. And they're on top of the game right now. 2 wickets have gone down very early for Karachi Knights.
The latest being of the captain. What a funny dismissal that was. Yes, batsmen stay deep in the crease, and there are certain protocols to manage yourself if you are deep in the crease and playing pull shot or cut shot, anything. So Haris was really rolling the air and was that is how he got out. The left leg came into contact. In fact, he smashed the stumps. And what's the reaction? Why the stumps are placed here? That is he complaining for? So you can't complain. You played a good shot, but net result wasn't good in your favor. Maybe he's going to ask an adhesive company to be the sponsor in the next season so that the bails do not come off when you struck the stumps. But nevertheless, I mean, they have been playing tape ball cricket for such a long time. Wasim Appu, meanwhile, is the new batter in at number 4. Awais has also got his first wicket. Tell you what, he timed it well enough. Would have been another maximum. Absolutely. Swing and a miss. What a good over it is turning out to be, despite the 6 here. And also the player like Haris, who has no such control, is staying deep in the crease. So why doesn't he step forward and stay bats on the crease, popping crease? And that will give him extra margin to save himself. Almost every batter stands deep inside the crease, but the fact that whenever they have offered a stroke, they take a step forward. Instead, Haris was swiveling. He was rotating. Full toss. Didn't time as much he would have liked. Dot ball. No chance for a single here. Yeah, some mind games are being played between the batter and the bowler. Another dot ball it is. 2 overs done. It's 11 for 2. Very dull start from Karachi Knights, 11 for 2, and they are still 81 runs behind. So pressure building up for sure. And the batsmen also can stay, if they stay on the popping crease, they can convert the potential Yorkers into full tosses as well. They stay deep in the crease to convert Yorkers into half volleys to give them extra time to deal with the ball. But we haven't seen any batsmen staying on the popping crease just to change the length, to convert the ball into full tosses. So they have their own mindset and everyone follows the same protocol. But it's quite surprising, only one batsman has got out hit wicket and most of them have very good control. Yeah, the other 6 teams and their players must have seen that dismissal, and they will come out with a different plan so that they cannot become the victim of a hit wicket. Meanwhile, it's Ubaid lefty on strike and he needs to deliver. Just one ball he has faced out of 12 deliveries. That is quite amazing. Umar again. Big shot. Good swing of the bat. Is it long enough? Got him. Not long enough. Well taken in the deep. And it's a huge blow. Ubaid lefty departs. Tell you what, that is an outstanding catch from the fielder at deep mid-wicket. He was running away towards his left. It went miles up in the air, and Ubaid lefty did time it well enough as well. And for a moment, we thought that the fielder might have overrun it. There you see, he moved towards his left, but still managed to take it in his right side. Ubaid lefty, well, the luck is definitely not in the favor of the left-hander. He walks back for another low score for just one. It's 11 for 3. Not a healthy looking card for Karachi Knights. If you are a fan of Karachi Knights, you won't be a happy man. Wickets keep falling here. And it was a big one. The last wicket fell. Ubaid lefty, a real devastating cricketer. He timed it well, but not well enough to get the distance. And it was a good high catch at the boundary, just a yard inside the boundary. And it was very well judged indeed. 3 wickets have gone down very early. Imtiaz Imti is coming to bat at number 5. It's 11 for 3. Not a good looking scorecard. I hope that's not the scorecard when we wake up into the morning next week when Pakistan are going to be facing Australia in the first test match. Meanwhile, Umri Pacer has picked up 2 wickets. Look at the spell. Has just conceded 3 runs. As a bowler, when you haven't conceded a boundary in tape ball cricket,
I think it's an achievement of sorts. And Umar has done that on many occasions in this tournament. Absolutely, star performance from him so far. Time for the take shot off the inside edge. Intentions are pretty clear. He decided to take on the premium bowler. Well, he's very deceptive talking about Umar because, yes, he's got a long run up. He's pretty lean. He doesn't have that high jump in his action, but he delivers them really quickly. Sometimes as a batter, you are not expecting the ball to come at that pace. Even Imtiaz was clearly beaten by the pace on that previous delivery. Still got a single though. Went for the big shot. Good swing of the bat. One bounce. Well fielded. Achibat down there. Good work. Few more inches and that would have gone straight to the lap of that fielder at square leg. It was hit hard, it was hit flat, and he was very lucky. It seemed that the ball just bounced in front of the fielder. But once again, bowling to his field, Umri Pacer, he knows he has taken a fielder deep there at square leg, so he can afford to drop it slightly shorter while coming around the wicket. Just luckily he didn't strike better than this. It was so close to be caught. Went for the big shot, quick swing of the bat. He's found the gap. Good work. Tremendous fielding. Tell you what, he saved 3 runs there for his side. And he's being applauded by each and every member of the team. It was swung hard, it was down the leg side. There wasn't big gap between deep mid-wicket and deep square there. Look at how hard he hit that and how much ground he had to cover. Still managed to stop that ball with his right hand. Excellent effort in the field. Top class stuff. We have seen number of great catches. Good swing of the bat, good contact. How good is that? Into the crowd for half a dozen. Well, he was looking for the similar result in the previous ball as well. This time getting the elevation and the distance and sending it into the crowd. Much needed maximum for Karachi Knights. He caught the weight on that occasion. Good swing towards square leg. A full-blooded strike. And they need few more shots like that to release the pressure. Umar again. Missed it altogether. Missed it altogether. Still a good over. Dot ball to finish over number 3. 20 for 3 Karachi Knights. They are 72 behind. Three overs are done. It's 20 for 3. Time for a change in the commentary box. It's going to be Yahya Hussaini alongside Rana Ashfaq. बहुत शुक्रिया ज़िशान खालिद और फर्रुख रियाज। 20 रन्स 3 खिलाड़ी आउट। 72 रन्स का खसारा पहली इनिंग्स की बुनियाद पे अभी भी है और सिर्फ 3 ओवर्स बाकी हैं। और खुश आमदीद जाइए भाई। वालेकुम अस्सलाम राना अशफाक। और बिल्कुल ये इस टूर्नामेंट का मुख्तसर मैच मुझे लग रहा है क्योंकि कराची नाइट्स जो है वो DHA दबंग के अगेंस्ट बिल्कुल भी अब तक परफॉर्मेंस जो है बल्लेबाजी में वो प्रेजेंट कर नहीं पाए। आइए अब डाउन स्टेयर्स चलते हैं कायनात के पास। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस दौरान कायनात तैयारी कर रही है और हम आपको बताते चलें कि ऊंचा स्ट्रोक बैट्समैन ने खेला था। और अब चलते हैं कायनात के पास। शी इज़ वेरी मच रेडी। Thank you so much. Assalamu alaikum viewers. I am Kainat Imtiaz and with me today is Mr. Haji Ashraf, an event organizer जिनकी बहुत सारी खिदमात हैं क्रिकेट के लिए। कराची में क्रिकेट की फ़रोख्त के लिए सर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। किस तरीके से इस KTPL को देख रहे हैं? माशाल्लाह ये ज़ोहर साहब ने बड़ी अच्छा इवेंट करवाया है। ये इस तरह के इवेंट तो कराची को 4 चांद लगा देते हैं। आप देख रहे हैं हर जगह कोई एंटरटेनमेंट है ही नहीं हमारे पास। और इस तरह के इवेंट होते हैं तो लोगों को मौका मिल जाता है कि अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। आप देख रहे हैं माशाल्लाह इतने तमाशाई आए हैं और मैच को एंजॉय कर रहे हैं। सर एंजॉय करने की बात पे आप कौन सी टीम को इस वक्त सपोर्ट करने आए हैं यहाँ पे? मैं DHA दबंग को सपोर्ट कर रहा हूँ। दानिश भाई को जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं DHA दबंग को सपोर्ट करने आया हूँ। जिस टेप बॉल क्रिकेट को किस लेवल पर ले गए, तीसरा सीजन है ये KTPL का, किस तरीके से इसे देखते हैं कि ये आगे कराची को किस तरह हेल्प कर सकता है? माशाल्लाह KPTL को ये तो रोड वाली क्रिकेट है ना, तो हर क्रिकेट को सपोर्ट होता है। ये जो रोड पे खेली जाती है ना, इस क्रिकेट को सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात है
कि ये जोहर साहब ने जो रोड पे खेलने वाले प्लेयरों को इतने बड़ी फैसिलिटी दी हुई है कि वो टीवी पे आ रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें KTPL को एंड वी थ्रो इट ओवर टू द कॉम बॉक्स। और इसी दौरान एक और ऊंचा शॉट, लेकिन बाउंड्री से पहले ही फील्डर गेंद तक पहुंच गए। और DHA दबंग की टीम जो है वो कराची नाइट्स की जो परफॉर्मेंस है बैटिंग में, 3 विकेटें गिर चुकी हैं, 5वें ओवर का खेल जारी है, सॉरी 4थे ओवर का 22 के स्कोर पर। और अभी तक कोई बैट्समैन जो है वो तासुर कायम करने में कराची नाइट्स का यहाँ कामयाब नहीं हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा, अब तक ऐसा लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रगल की है, काफ़ी जद्दोजहद की है बैट्समैनों ने। और अगर आज ओवरऑल जायज़ा भी लें हम, तो पहला मैच भी हुआ और इस मैच की भी ये दूसरी इनिंग्स है, तो कुल मिलाकर 6 इनिंग्स अब होने को हैं, लेकिन किसी भी टीम ने 100 रन को क्रॉस नहीं किया। एक मरतबा फिर हम आपको ग्राउंड में लिए चलते हैं जहां कायनात इम्तियाज मुंतज़िर है। मेरे साथ यहाँ पर एक और ही छोटे से बहुत बड़े फैन मौजूद हैं जो इससे पहले के मैच में फैन ऑफ द मैच बने थे। इनसे इनका नाम पूछते हैं, लेट्स फाइंड आउट कि इनकी क्या जज्बात है इस मैच को लेकर। नाम क्या है आपका? मोहम्मद इदरीस। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस। कैसा लग रहा है मैच? अच्छा। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? कराची। कराची के फैन हो? यस। तो KTPL के बारे में क्या कहना चाहोगे? गुड। और मुझसे पहले क्या बता रहे थे, क्या क्रिकेट के बारे में क्या कह रहे थे? आई लव क्रिकेट और आई एम क्रिकेट। देखे जाए किस तरीके से फैंस यहाँ पे छोटे से छोटे फैंस आ रहे हैं, यही खूबसूरती है। आई थ्रो बैक टू द कॉम बॉक्स। बहुत शुक्रिया कायनात। और जिस मुश्किल में कायनात थी वो उसी मुश्किल में इस वक्त कराची नाइट्स है। आपके साथ अगर गुफ्तगू करने के लिए ये छोटा बच्चा था और बहरहाल उसने कायनात के साथ अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन इस वक्त कराची नाइट्स की टीम जो है वो बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बनी हुई है। DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में, और अब तक की जो इनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही कंसर्न वाली है कि इस टूर्नामेंट में अब तक किसी टीम ने इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी जिस तरह अब तक कराची नाइट्स की परफॉर्मेंस है, और अब तक टाइम नहीं कर पाए हैं बैट्समैन। बिल्कुल, देखें एवरेज इनकी 6 की है, जो कि अमूमन हम कभी 15 की देखते हैं, कभी 16 की, कभी इवन 20 की, लेकिन यहाँ 6 की औसत से रन्स बनाए हैं इन्होंने और 3 विकेटें भी लूज़ की हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल में हैं। लेकिन DHA दबंग के जो कप्तान हैं यासिर मुश्ताक, उनको इस मैच की अहमियत का अंदाज़ा है। और आप देखिए कि अब भी जो है वो कुछ 66 रन्स के ट्रेल में है कराची नाइट्स, लेकिन वो वैसे ही इन्हिमाक के साथ फील्डिंग सेट करते हुए जवाद को एक बार फिर बॉल डालने के लिए लेकर आए, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 4 रन दिए थे। जी हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है कि किसी भी मौके पे आप जो है रिलैक्स ना हो जाएं, कॉम्प्लेसेंट ना हो जाएं। हमने देखा है कि सिचुएशंस बदलते क्रिकेट में देर नहीं लगती। क्रिकेट जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है और कभी कभी तो उससे भी तेज़। मुश्किल सूरत हाल से कराची नाइट्स, क्या वसीम और इम्तियाज़ यहाँ से अपनी टीम को टेक ओवर करेंगे और जो खसारा है वो कम करने में कामयाब रहेंगे, जो अब भी 66 रन का है और 90 रन स्कोर किए थे। DHA दबंग ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 6 ओवर में अवैस, और इस बार भी ज़्यादा कुव्वत वाला स्ट्रोक नहीं था वसीम का, डबल फिगर में पहुँच गए हैं, लेकिन बड़े स्ट्रोक्स की यहाँ पर कराची नाइट्स को ज़रूरत है। बिल्कुल, अब महज 11 गेंदें इस इनिंग्स की बाकी हैं और इनको इस्तेमाल करना होगा। कम से कम 30-40 रन तो बनाने ही होंगे जहां तक इनके नुक्ता निगाह का ताल्लुक है, लेकिन देखते हैं इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं, क्योंकि DHA चाहेगी कि वो एक बड़ी बर्तरी, बड़ी सबकत हासिल करे। अब ऐसे इस ओवर में दूसरी मर्तबा और इस बार उठाकर खेले हैं, जोरदार शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब पहुंची और यहां पर फील्डर पहली कोशिश में गेंद को रोक नहीं पाए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत देर के बाद ये चौका लगा है। जी हाँ, ये चौका बड़ी अहमियत का हामिल है और ज़्यादा अहमियत इसलिए इख्तियार कर गया ये चौका कि शाज़ो नादरी चौके लगे हैं इस इनिंग्स में, छक्के तो बिल्कुल ही कम है, तो ये चौका यकीनन बैट्समैन के एतमाद में भी इजाफा करेगा और कहीं ना कहीं इनकी टीम भी बड़ी खुशी का इजहार करेगी। और यासिर
हारिस अली जो कि कराची नाइट्स के कप्तान है वो अनलकी रहे, उन्होंने डीप मिड विकेट पर छक्का मार दिया था लेकिन हिट विकेट आउट हो गए वो। हालांकि इस टूर्नामेंट में जो बैट्समैनों को मैंने देखा है बिल्कुल क्रीज के अंदर विकेट से लगकर खड़े हुए हैं, लेकिन हिट विकेट हमने कम देखा है। और इस बार ऑन साइड पर खेले हैं उठाकर, गेंद बाउंड्री लाइन के बहुत ही करीब, शानदार कैच में तब्दील हो गई। जी हाँ, बड़ा अच्छा कैच। आज फील्डर्स की भी रात है, एक तरह से बॉलर्स की भी रात है, बैट्समैनों के लिए आज कोई बहुत कुछ नहीं हो रहा। यहाँ मोइन खान एकेडमी में इस गेंद को खेले कि हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट स्वीप करने के अंदाज में, स्लॉग स्वीप करने के अंदाज में, और फील्डर ने अपने आप को बहुत उम्दा स्प्रॉल करते हुए चले गए, घास के साथ रगड़ खाते हुए बहुत उम्दा कैच किया। इम्ती आउट हुए 7 रन बनाकर 29 पे 4। नए बैट्समैन जुनैद बैटिंग करने के लिए आए हैं, वसीम 11 रन पे मौजूद हैं। और अभी आपने बड़ा अच्छा मेंशन किया हिट विकेट का, और छक्के पे हिट विकेट होना। जुनैद जॉनी है बैट्समैन। मुझे इंजमामुल हक याद है, रॉबिन पीटरसन जो साउथ अफ्रीका के स्पिनर थे, उनकी गेंद में इंजमामुल हक का भी छक्का हो गया था और हिट विकेट हो गए थे। चलें, अब आपने मेरी जो है वो क्या कहते हैं नॉलेज का अगर इम्तिहान लेने का सोचा, मैं आपको 2006 में लेकर जाऊंगा, जहां पर आपको याद होगा ओवल का मैदान था और फोरफिट हुआ था टेस्ट मैच बॉल टेम्परिंग के ऊपर। उस दौरे में मॉन्टी पेनेसार की गेंद पर इंजमामुल हक जो है वो विकेट के ऊपर घुस गए थे। बिल्कुल। अवैस और इनकी ये गेंद स्लो वन थी, पेस चेंज किया और जुनैद इस गेंद को जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। यानी इंजमाम के साथ ये काफ़ी मरतबा हो चुका है। एक दफ़ा तो इंजमाम अवेसिव एक्शन लेते हुए बॉल थ्रो की गई, उन्होंने बैट से रोकी और वो भी। ये आप पेशावर की बात कर रहे हैं, इंडिया के साथ मैच था और खिलाड़ियों ने जो है वो उनको आउट किया था और वो आउट हुए थे ऑब्स्ट्रक्टिव कटिंग फील्ड। यस, रूल नंबर 37.2 के तहत उन्हें आउट दे दिया गया। और इस बार उठाकर खेले हैं जुनैद और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, छक्का। बड़ा जोरदार शॉट, और जुनैद ने कहा कि याहिया और राना आप पुरानी बातें बंद कीजिए, मेरी बात कीजिए, मैं यहाँ छक्के लगा रहा हूँ। कदर बेहतर ओवर रहा है ये अब तक कराची नाइट्स के लिए, एक चौका और अब ये छक्का। इस तरह के शॉट इस टूर्नामेंट में हमने बहुत देखे हैं, लेकिन कराची नाइट्स की तरफ से इस तरह की बैटिंग की अब तक जो है वो तवक्को ही की जा रही है। बहुत देर की मेहरबान आते आते जुनैद आए हैं और एक और जोरदार शॉट जुनैद का और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, बैक टू बैक छक्के। अब इनके चाहने वाले सोच रहे होंगे इन्हें पहले क्यों ना भेजा गया, ये पहले आते तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता था। 5 ओवर्स के बाद 41 रन, ये आखिरी छक्का, फुल ब्लडेड स्विंग, कोई हाफ मेजर नहीं, खूबसूरत बैटिंग। जावेद कदीर इस टीम के जो है वो कोच हैं और उनका भी बड़ा दिलचस्प वाकया है। 4 ओवर के बाद 41, कराची नाइट्स अब भी 51 रन के ट्रेल में। हुआ ये कि गालिबन ये बात है 1994 की, पाकिस्तान टीम शारजा में खेल रही थी, चिकन फॉक्स हो गया मोइन खान जिनके नाम पे ये क्रिकेट ग्राउंड है, तो जावेद कदीर को जो है वो कॉल किया गया। तो जावेद कदीर नाज़िमाबाद से चले, W11 बड़ी मशहूर है आपको पता है कराची में, तो वो W11 में एक जिस तरह ये जश्न हो रहा है बिल्कुल इसी तरह काफिले की शक्ल में वो कराची एयरपोर्ट पहुंचे। जब वो कराची एयरपोर्ट पहुंचे, उनकी फ्लाइट थी, उनको बताया गया भाई आपके जहाज को उड़े हुए भी 2 घंटे हो गए। ओह माय गॉड, ओ पुअर जावेद कदीर, जश्न करते रह गए। और सुबह मैच था, और सुबह मैच था शारजा में। ओह, ये भी देखें, किस्मत की बात है। अवैस मीर, चेयरमैन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, इन्होंने कहा कि इस बहती गंगा में मैं हाथ धो लेता हूँ, क्योंकि 2 ओवर में कितने रन बना लेंगे ये। पिछले मैच आपको याद होगा 2 ओवर में 36 बन गए थे। जी हाँ, अब देखना ये होगा कितने स्किलफुल हैं। जिस्म में तो कुछ मेरी तरह कुछ वजनी है, क्योंकि इतने नहीं जितना मैं हूँ, लेकिन बॉल के साथ इनका स्किल क्या है ये देखना है। अवैस मीर बूम बूम शाहिद आफरीदी के कज़न भी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में अब अवैस मीर ने कहा बस यहीं तक, इससे ज़्यादा नहीं। उन्होंने कहा बस मैं आया था
उन्होंने कहा नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, आप किसी और से करवा लें। बस इनके साथ भी जावेद कदीर वाला मामला तो नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि आपका प्लेन निकल गया। ये मैं पूछता हूँ वैसे जाके क्या हुआ है। स्क्रीन पर आ गए हैं ओवैस और उन्होंने पूरे शशके दिए, आए बॉल डालने के लिए, फॉलोअर थ्रो भी लिया, रन अप भी लिया। कप्तान को कहा उन्होंने नहीं जी यासिर मुश्ताक साहब आप मेरा ख्याल है वाइस से ही करवा लें बॉल। आप आए हैं बॉल करने के लिए। वाहिद देखते हैं कि वो किस किस्म की बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे आखिरी ओवर इस इनिंग्स का। बहरहाल हमने जावेद कदीर की बात की, बड़े अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन रहे वो, और अभी हाल ही में मेरा ख्याल उम्रा करके भी आए, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हिज उम्रा। ये नवाब कैफी नहीं है बल्कि ये शोबिस टीम के नवाब हैं। तो अब देखना है 51 रन का खसारा है कराची नाइट्स का, और जब से जुनैद बैटिंग करने के लिए आए हैं, वसीम बैटिंग कर रहे हैं, इन्होंने कुछ जो है दाद रसी की कोशिश की है कराची नाइट्स की। वाहिद और बॉला बैक ड्राइव खेले हैं, जोरदार शॉट, बिल्कुल गेंद के करीब पहुंचे, बाउंड्री के करीब फील्डर। इस दौरान 2 रन दोनों बल्लेबाज हासिल करने में कामयाब रहे। तो 49 रन का खसारा अब भी बाकी है, और ये डग आउट है डीएचए दबंग का। बहुत दबंग परफॉर्मेंस है आज डीएचए दबंग की, 90 रन किए उन्होंने, और वक्कास छोटू ने एक और बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, निफ सेंचुरी स्कोर की। बहुत ही उम्दा और यादगार इनिंग्स उन्होंने खेली और अपनी टीम के स्कोर को 92 रन तक पहुंचाया। हालांकि पहले 2 ओवर में 45 रन बने थे और आखिरी 4 ओवर में 45 बने। वाहिद और ये वाइड होगी बिल्कुल, और यहां वाइड के 2 रन हैं, नो बॉल के 2 रन हैं। गेंद एक ही काउंट होगी लेकिन रन 2 होंगे। पिछले मैच में बहुत कॉस्टली रहे वाइड्स, 17 वाइड, और हार का यही सबब थी गुलशन गौहर की। 5 गेंदों का खेल बाकी, 48 रन का खसारा। केटीपीएल के चेयरमैन अवैस आफरीदी मीर। और गेंद को उठा दिया है, फील्डर गेंद के बिल्कुल करीब पहुंचे और उन्होंने इस कैच को मुकम्मल किया। जी हाँ, खुशी की लहर न सिर्फ फील्डर के चेहरे पे देखी जा सकती है बल्कि डगआउट में भी, और बॉल की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। ये हम देख सकते हैं, फ्रंट फुट से गेंद को लिफ्ट किया था लेकिन लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद थे, बाउंड्री के कुछ यार्ड्स अंदर, उन्होंने कैच किया और फिर बड़े अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट किया। जी हाँ, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई उनको ये कैच करने में, बिल्कुल चेस्ट हाइट पर उन्होंने ये कैच लिया। और जुनैद जॉनी 4 गेंदों पर 2 छक्कों के साथ 12 रन बनाने के बाद वापस। शफीक आने वाले बैट्समैन 10 नंबर टी शर्ट पहनकर एंटर हुए हैं। आधी टीम कराची नाइट्स की पवेलियन लौट गई है। ये छठा और आखिरी ओवर है कराची नाइट्स की पहली इनिंग का। याद रहे डीएचए दबंग ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की थी और वक्कास छोटू के हाफ सेंचुरी के साथ 90 रन बनाने में कामयाब रही थी। इन रिप्लाई 44 for 5 कराची नाइट्स। बहुत उम्दा बॉलिंग डीएचए की, बहुत उम्दा बॉलिंग। किसी टीम को 6 ओवर्स की इनिंग्स में अगर आप 50-55 तक महदूद कर पाते हैं तो बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा। अशका आए हैं बैटिंग करने के लिए, असलम अशका। तो निक नेम्स का सिलसिला जारी है। अशका वाहिद का सामना करेंगे पहली मरतबा इस ओवर में, और आते ही उन्होंने गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की। गेंद उनके बल्ले का निचला किनारा लेती हुई लॉन्ग ऑन पर आई। 1 रन तक की बात महदूद रहेगी, 1 रन बने कोई मसला नहीं है। अशका वैसे जो अशके भाई अशके हम कहते हैं, एक्सप्रेशन है किसी को दाद देने का या शाबाश देने का या खुश होने का, तो ये अशका है, मतलब उसी सेंस में है। मैं तो समझ रहा था अशका को शशके दिखाएंगे। और इस बार अवैस मीर पहली कोशिश में गेंद को पकड़ नहीं पाए, लेकिन अब तक गेंद के पीछे भाग रहे हैं और आखिरकार उन्होंने गेंद को पकड़ लिया, क्योंकि वक्कास छोटू यहां पर मौजूद थे। कहने लगे सर इतनी दूर से आप भागते हुए आए, अच्छा नहीं लगता मैं गेंद उठाऊं, आप उठा के दे दें। जी हाँ, बूट से उन्होंने गेंद को रोकने की कोशिश की थी। अब ये देख सकते हैं, अब खुद भी हंस रहे हैं कि मैंने क्या किया। बहरहाल दूसरे फील्डर ने उनको हेल्प
It's 11 p.m. क्यों मन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। शायर मशरिक अल्लाह क्यों मन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। बॉलिंग करना है मगर एक बहुत ही वन साइडेड परफॉर्मेंस है फर्स्ट इनिंग में डीएचए दबंग के अगेंस्ट कराची नाइट्स की। आउट क्लास किया है डीएचए दबंग ने, पहले बैटिंग की और फिर बॉलिंग में उनके कोई तोड़ नहीं है कराची नाइट्स के पास। बिल्कुल मैं समझता हूं कि एक अच्छी बर्तरी के साथ इस इनिंग्स को फिनिश करेगी डीएचए, और फिर अगर छोटा विक्की और खुर्रम चकवाल एक बार फिर चल निकले तो एक बड़ा टारगेट लगता है कराची नाइट्स को मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये जो कराची नाइट्स है ये कराची पुलिस के जवानों का मजमुआ है। और एक और अच्छा बॉल वाहिद का, बिल्कुल आउट कर विकेटों के सामने, और ये आउट होंगे बिल्कुल। असलम आउट होकर वापस दूसरा रन लेना चाहते थे, नाकाम रहे। तो 6 ओवर मुकम्मल हुए कराची नाइट्स की पहली इनिंग के। 48 रन उन्होंने स्कोर किए हैं, 6 विकेट के नुकसान पर 44 रन की बढ़तरी हासिल की है पहली इनिंग में। और 44 रन के साथ अपनी सेकंड इनिंग का आगाज करेगी डीएचए दबंग। और ये असलम के आउट होने का मंजर यहां से तो ये फ्रेम में भी नहीं है बिल्कुल। जी हाँ, बहुत दूर रह गए और एक आसान रन आउट। तो इस तरह 44 रन की बढ़तरी 6 ओवर्स के मैच में, जहां आपने 92 रन बनाए हों, बड़ी अहमियत की हामिल है। किसी टीम ने 300 रन बनाए हों, दूसरी को 150 पे आउट कर दे वनडे मैच में, इस तरह की ये परफॉर्मेंस है डीएचए दबंग्स की। और अब उनकी दोबारा जब बैटिंग होगी तो देखते हैं कितने रन्स करेंगे। कराची नाइट्स की बहुत ही फीकी बैटिंग परफॉर्मेंस और डीएचए दबंग ने दबंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया है बैटिंग के बाद बॉलिंग में। और बहुत ही कंटेन किया उन्होंने कराची नाइट्स की टीम को। 48 रन तक 6 ओवर में उन्होंने महदूद रखा। 8 रन उनके रन बनाने की औसत, और 15 रन की औसत से डीएचए दबंग ने 6 ओवर्स में 90 रन स्कोर किए थे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया। और ये जनाब कराची नाइट्स की इनिंग्स की हाइलाइट्स आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, जिसमें स्ट्रोक्स यकीनन कम हैं, लेकिन ये बहुत ही शानदार कैच। वसीम पप्पू का छक्का था, एक और बड़ा स्ट्रोक खेला था उन्होंने ऑफ साइड में। देन ये बहुत ही शानदार कैच, बहुत उम्दा कैच। ये कुछ बड़े स्ट्रोक्स देखने में आए बीच में। देन एक और बड़ा अच्छा कैच और फील्डर की बड़ी शानदार सेलिब्रेशन। ओह, व्हाट अ ब्यूटी ऑफ अ बॉल। आउट कर ये KTPL सीजन 3 कराची नाइट्स का स्कोर कार्ड। 14 रन स्कोर किए वसीम ने, 12 रन स्कोर किए जुनैद जानी ने, और बाकी कोई बैट्समैन डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। 6 ओवर में 7 विकेट पर 48 रन स्कोर किए। और ये डीएचए दबंग का बॉलिंग कार्ड, दबंग कार्ड उनकी बॉलिंग का। और यहाँ पर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उमर ने 2 ही विकेटें हासिल की, अवैस ने, और 2 ही विकेटें वाहिद ने हासिल की। तो पहली विकेट 2, दूसरी 11, तीसरी 29, चौथी 44, पांचवी 47 और छठी 48 के ऊपर। बहुत ही उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा डीएचए दबंग की जानिब से। एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको डीएचए क्रिकेट अकेडमी मोइन खान से खुशामदीद कहेंगे।
अस्सलामुअलैकुम। ये कुरैशी गारमेंट्स का स्टॉल है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। कुरैशी गारमेंट्स की तरफ से बचत एक्सपो में आप लोगों को बहुत ही मुनासिब प्राइस पर बेबी फ्रॉक्स वगैरह दी जा रही हैं। इसी तरीके से मेंस की टी शर्ट्स हैं, रिजनेबल प्राइस हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी है। आप लोग आइए और ज़रूर इस धमाकेदार ऑफ़र से फ़ायदा उठाइए। अगर आप लोग चाहें तो आपको प्राइस का थोड़ा सा आगाह कर दें। ये 400 ईच है टी शर्ट राउंड नेक की और 1500 की 4 दे रहे हैं। इसी तरीके से पोलो टी शर्ट्स हैं, वो 600 ईच है, 1000 की 2 दे रहे हैं। इसी तरीके से हर एक शर्ट्स पर, टी शर्ट्स पर कोई ना कोई ऑफ़र लगी हुई है। ये आप घी कुकिंग ऑयल लेके आ रहे हैं तो मार्केट के लिहाज से कोई डिस्काउंट मिला? बिल्कुल। Welcome back once again from DHA Sports Club, Moin Khan Cricket Academy, where UBL Amin presents KTPL Season 3 is going on with a bang. Two of the umpires are getting to the ground, showing those taped white new cherries. So it's going to be a third innings. DHA Dabangs will be batting now. And they have got some serious things to offer, as we all know, Waqas Sher and Khurram Shehzad. Bashing players at the top of the order. There you see the players of Karachi Knights making their way to the center. They've got a lot of job to do. With me is Kainat Imtiaz. It's going to be an interesting innings, Kainat. Oh yes, we are waiting for them to score big so that we can see some huge 6s and 4s in this innings. It's DHA Dabangs versus Karachi Knights. DHA Dabangs already has a lead of 44 runs. Tell you what, it's only a 6 overs inning, so that is some lead, 44 runs. They will start their batting with 44 for naught, effectively. And it's going to be all pressure on Karachi Knights. They will have to bowl out of their skills to stop these batters, Waqas Sher and Khurram Shehzad. Very devastating, very dangerous. There you see Waqas Sher made 50 in the first innings of just 17 deliveries. We'll love to repeat the performance for the DHA's perspective. And there he is, his partner Khurram Shehzad. Didn't click in the first innings, but definitely would love to get things going with the bank as he normally does. So it's going to be Ali Sher, the bowler, right arm fast, to take the attack. So we are all set here as the bowler Ali Sher is warming up. Right arm over the wicket hai. DHA Dabangs starting their batting with 44 already on the board. Looks as if it's going to be a very easy task for DHA Dabangs with no pressure whatsoever. This will be an interesting game, actually. And this is what it happens. It goes high, and it's going to be a catch, which is not accepted by the fielder. Well, he's got himself into an awkward position, Mursalim, the fielder down there. It was miles in the air. Should have caught that. Well, if you see the body language of Karachi Knights, it's not looking so good. And the fielder was completely lost and almost hit the other fielder too.
Well, opportunity presented very early in the piece, but goes bagging. It's not going to help Karachi Knights' cause. This is the last thing they needed. To put down somebody like Waqas Sher is just not going to do any word of good for you. And one thing it does, it brings Khurram Shehzad on strike, who is also a very dangerous customer at the top of the order. Gets a full toss, hits down the ground straight to mid-on. Doesn't get the connection of his liking. Khurram and Waqas might go big on every delivery as they know they already have a lead of 45 runs. They're going to play with a very big heart. On the other hand, Karachi Knights must be under a lot of pressure. It was from a different angle. Had to reach for that. Khurram plays through the covers. Will get off the mark with that single. Well, people have definitely turned in numbers. Earlier you were there downstairs, Kainat. You would have been witnessing. People do love cricket here in Pakistan, and especially this shorter version, this type ball. That one never arrived. Has a wry smile on his face. He knows that was a slow one and took ages to reach to the batter Waqas. Even though he did wait for the ball to reach him, but still missed it. Again, just look at the wait. He did wait a lot. This time he gets one, but he hits it high enough. Will somebody get underneath this one? Oh my word, you gotta be kidding me. Another one goes down. Karachi Knights, oh my dearie, what are you doing? Well, they are not focused. They have missed 2 catches of the same player. That too, Waqas, the most destructive one in this team. Well, this is going to cost them a lot. Again, a mistimed shot. High up in the air. Again, the fielder was not able to grab the ball. Well, we won't say it's unlucky. On the legs asking for punishment, and it's a 1 bounce 4 for Waqas Sher. He was waiting for that type of delivery to get himself going. Earlier he's hit a couple of in the air. Well, again, if you give Waqas a leg side delivery, that will be punished. And also his heart will be even bigger because he had 2 chances already. DH Dabangs, 8 for none. Right then, it's 8 for none. DH Dabangs. We have seen a couple of catches going down in the last over of Ali. He went for 8 runs. Could have had a wicket against his name as well. Had one of those catches been grabbed by the fielders, but the fielders are just not looking good tonight for Karachi Knights. Imtiaz Imti is going to be the bowler to share the attack with his partner. Well, the bowlers are bowling their heart out, but on the other hand, Kainat, the fielders got to do the job as well. They got to back their bowlers, which is not happening for Karachi Knights. Well, if you have a lead already, or if you're chasing a low total, so, I mean, you need to have the fielding strength. You need fielders to back you on every delivery. Because, as we say, catches win matches, and they desperately need those catches. And this is often... Oh, he pulls a big wide to start off his spell. Got to come back, starts off with the loosener. Have a look at that body language. You're right, Kainat. They don't seem to be up for the challenge. So I was just extending that word by you. You were saying that take catches, make matches, and the other saying is drop catches and hand over the matches. Loses his run up there. Well, this is what happens. As I said, the body language matters a lot.
Even if you have 10 runs to defend, your body language should be top class as a cricketer. Oh, it was slow. He waited for it, and he has taken all the time in the world to send it back into those trees for another maximum here. It's Khurram Chakwal. And again, a little short pitch delivery. Did not have a lot of bounce. And he did hit it over mid-wicket. That one just set up quite nicely for somebody like Khurram Shehzad. And he's hit that very nicely over mid-wicket. This time he goes through the offside. How good is that? That is the shot of the night for me, Kainat. That is a proper cricketing stroke through the covers. Well, that exactly is. Again, what a punch it was. Great shot. I mean, look at the power on this shot. This is what happens when you play hardball cricket too. Well, he really smashed it, didn't he? Had to reach for that, and out of the middle of the bat, cracking sound it made. It was just as good as somebody like Virat Kohli. Again, had to reach for that. This is outside edge. Will fetch him a single. They're looking for another one. But his partner says that, come on, mate. Let me have a bit of strike, says Waqas Sher. Just so desperate for runs, he did play the wide. That was a wide delivery, actually. And again, they're trying their best to score as many runs possible. Oh, well, look at that. He tumbled and then got up and didn't through. Oh, this time he gets one in his arc and he sends it way, way over mid-off for yet another maximum. Just look at his positioning. What a great shot it was. On the line, on the merit of the ball, towards the offside. But these are the shots we live for, I think, because they're just exceptional. You're right, Kainat. We are here for that type of entertainment. Oh, this time he's yoked him. Good comeback delivery. But the damage has been done in this over. Couple of sixes and a boundary. That was a sizzling boundary through the covers from the bat of Khurram. Waqas Sher moves to 13. Both of the batters are into double figures. And effectively, they are 71. As they got in the lead of 44 runs before the start of this innings. Under the pump already, Karachi Knights. Oh, he had a big hoik. Went across the line a touch as well. Dot ball to finish the over. 2 done. It's 27 for none. All right then, 27 for none. Karachi Knights under a bit of pressure here. Ali will continue, bowled a very good over. I thought he was pretty unlucky in that first over. Have a look at a few of the sponsors here. MNP, Top Link, Sindh TV, State Life Insurance Corporation of Pakistan, Badar Expo Solutions, and of course the title sponsors UBL Amin, Zishan Salim Zaki Group, BTV, the official TV of Badar Expo. We are thankful to all the sponsors to make this league possible. There you go. He goes long and he clears long on. This time it's Khurram in the house. Wow, that was some shot. Seems to have just chipped it marginally, but the timing was exquisite.
That was a great flick shot. Just look at the head position of Khurram. It was down. He did not even look at the ball after hitting. It's just exceptional shots by Khurram Shahzad. He's gone for a flick. It's a top edge. And where it's going to land over the boundary. One bounce, 4. It's gone all the way. So it's all happening for DH at the bungs here. Rightly said, DH at the bung on the roll. They're going to hit as many runs as possible. And most of them will be 6s and 4s for DH at the bung. Well, we are here for this type of entertainment. We always love seeing the bat talk. But the bowlers are absolutely going the journey. Had to wait for that, and how well did he wait? And give it a smear. Oh my word, it could have been a blinder on the boundary line as well. It's all happening. Did well. I tell you what, the fielder did well to pull that back. What a great effort by the fielder. Well, this is getting interesting by the minute. I've seen good fielding efforts by the teams. Well, I got carried away with that blower as well. Had he been on the edge of the boundary, I reckon it could have been a catch. He was in business, but a good effort nevertheless. Jumping in time, timing his jump to perfection to keep the ball in play. Well done. Full toss, couldn't get the connection this time. It was Waqas Sher. We'll look for 2 here, and we'll definitely complete it. Well, they're hitting the good deliveries, and full toss was missed. Well, usually I see there are a lot of full toss that are missed and also there are a lot of batters who get out on a full toss delivery. You can never be ready for a full toss. It's not that bad delivery all the time, I can tell you, Kainat. We've seen full tosses fetching wickets. Even people like TM getting out on full tosses. And it's in the air. And the fielder, comes around, but he just couldn't gather himself to take that catch. Puts down another one. How many catches we are going to witness going down in this innings? Well, Alice does not seem disappointed at all. He is expecting this from the fielders, and it was Waqas again. Unfortunately, this is his 3rd catch dropped. Well, he's definitely riding his luck, his Waqas Sher. This time it was a better effort made by the fielder, but should have grabbed that. At the end of the day, you got to catch those. Oh, missing his radar, and keeper, how casual he was. He could have collected that ball, but he really just could not make the effort. He needed to stop that ball. I feel bad for Ali. 3 catches of the same batter. What else he can do for the team? He has been doing great when it comes to his bowling. He's just on his fielder's mercy at the moment. That's why he's missing his mark here. Another wide, we'll have to re-bowl again. Well, this is what happens. The pressure comes on to the bowler after all those missed catches and those fielding. Oh, another slow delivery attempted and nicely swept sort of stroke along the carpet, and with that couple, it will be the end of the over. So Ali was very unlucky. He's finished his bowling stint. Bowled his 2 overs, 3 catches went down off his bowling. Has been very unlucky to say the least. Three overs been done and dusted. And the commentary team is ready to take you through in Zishan and Rana Ishfaq. Thank you very much, FS and Kainat. So DH Dabangs continuing their Dabang performance in this match, while Karachi Knights is absolutely on the receiving end, not only in bowling but also in batting. And I've got
none else but young, energetic Zishan Khalid. Welcome. Thank you so much, Rana Ashfaq Saab. Even you are pretty young, I believe. It is your majesty. I don't think. One should be young by heart. Yeah. Dil hona chahiye jawan umran ch ki rakha hai. I am young by heart. Here you absolutely spot on. Meanwhile, Karachi Knights, well, it has been a night to forget for them. Because they put up a no-show with the bat in the previous innings. I mean, opposition scored 92 and they just could score 48. Zia, meanwhile, is the new bowler. And the fact that they haven't even put up an effort in this innings with the ball as well. Zia starts off with a short delivery, a slower one, which Waqas was not being able to connect. And we have seen 3 catches being put down already. Now, if you haven't batted nicely in the first innings, you can at least make up for it by taking those catches, by stopping those runs in the outfield so that you can create the pressure on the batters. But we haven't seen that either from Karachi Knights. Yeah, this is very lethargic and sloppy sort of a fielding, and which is adding insult to the injury, because A, they didn't bowl well in the first innings, then they didn't bat well, and now catches are going down. Because even if these 2 batters are not getting boundaries or maximums almost every over, they are still in a very strong position. I mean, they're still effectively more than 90 runs ahead, and they have almost 3 overs still remaining. Indeed, no doubt about that. They are finding themselves in a very strong position, almost in a secure position as far as DHA concerns. 51 without a wicket. Inside edge. Still, you see the ball is not stopped by the wicketkeeper, neither by that fielder at short fine, and that's going to run away for 4. Nothing going in the favour of Karachi Knights. And everything is going in the favour of DHA. That wasn't a convincing shot. That wasn't played with authority. There you see, inside edge, wicketkeeper couldn't quite able to stop it. Then fine leg and third man did not able to stop it. So runs coming. Yeah, instead of putting out their hand, they were trying to stop the ball with their left foot. Couldn't do it in the end. Too short, too wide, might be given as a wide. Yes, it is. It was well over head high. And with that extra 2 runs, 100 also comes up. In fact, the effective lead of 101 runs for DHA the Bunks. It's going to be a big target for the Karachi Knights. And they will be chasing an uphill task. He has decided to go straight. He has hit that hard, long and maximum. Just chota wiki. This is what he's known for. And this is where he's very good at. There you see. Packed himself on the back foot. He was camping on the back foot and then gave it a full go. Good hit. That was a nutting delivery as well. He's just coming and landing those balls. Once again, short and wide, slapped it towards mid-wicket. There's a fielder out there, will just get a run. He's not even putting in those efforts here with the ball. He's not even bending his back, as if he just want to come and release the ball. And other thing is, which I am noticing, ball is holding a little bit in the pitch. I think wicket is getting disintegrated a bit to me. Although it's a tape ball, it's not a hard cricket ball. Full toss on leg side, pumped away, but straight to the fielder at square leg. He's very lucky to get away with that. Otherwise, that shot had boundary written all over it. Yeah, that was on the leg stump and that would have been put away. There you see these ladies. 4 overs have now been completed, 64 for none. And the current average is 16 per over. And if you add the lead, it has taken them up to 108 with 12 deliveries still to be bowled. So they are in as strong position as anyone. Total dominance being shown here by DHA the Bunks, and they are being held by the fielding effort of the opposition as well. Otherwise, up till now, if they would have taken all those catches, DHA the Bunks would have been 3 down and would have been a different story altogether. Yeah, even a single drop catch at times can change the entire complexion of the game. They are dropping too many. They are asking for the trouble. Talking about drop catches, Pakistan is in Australia, or Pakistan national side, when we have a history of dropping catches and giving away runs whenever we tore down under.
Kindly don't refer Kamran Akmal. Come on, Zishan. I was watching that match on television. Then on the second day, I started to do commentary for radio that particular match. Doug Bollinger and who was the other? Michael Hussey. Oh my God. Oh dear. Kamran, don't mind, please. Shafiqur Rahman is the new bowler in. Well, I was just giving my generic point of view. You have the every right to voice your opinion. Coming around the wicket, it was a half tracker. He's very lucky to get away with it once again. Yes, you are right. It's the same strip is being used for each and every match, and it's the 8th day already. So you can expect the pitch to hold and grip a bit. And that's why more and more bowlers are now trying to land the ball on the pitch so that it can get slower and it becomes difficult for the batter. Yeah, it looks difficult for the batsmen to get those balls away. But it also depends on the bowlers, how they're going to use this track or how they should use this track.